Live after a long time. Um, Hello to everyone. I know this is an impromptu stream, and we hit 1,000 subs, man. That's fucking amazing. 1,000 subs, man. क्या ही बताएं, मजे आ गए. I don't know कितने लोग अभी देख रहे हैं. Maybe it's a Tuesday and you all are working. Maybe some of you are watching. I don't know, but it's a huge thing for me. Yeah. मजे ही आ गए. Actually, मजे आ गए. Um, so yeah, कैसे हैं आप लोग? Hey, Lucky, you're always first, man. You're always first, aren't you? Hey, Suraj, how are you, man? बहुत वेले हो? Welcome to the club, my friend. Welcome to the club. Um, but yes, man, 1,000 subs. How are all of you? It's been a long time since I've seen you guys. I'm sorry, I've been really busy. I got a job. I'm researching. अभी मुझे 2-2.5 घंटे में फिर से निकलना है. But I thought आज मैं भाई stream कर लेता हूँ. Portuguese Federation appeal to give Bruno goal to Ronaldo. Really? I don't think so, Tracy. But if that's there, then it's there. Hi, Tapil Jung. I'm good, man. How are you? कैसे हो? बस एग्जाम में फर्स्ट नहीं हूँ, बाकी सब जगह फर्स्ट हूँ. No problem, Lucky. If anything I know from life is that you will find your way, man. आप एग्जाम में फर्स्ट हो या नहीं हो, लाइफ आपके लिए हमेशा वर्कआउट कर जाएगी. आवाज वगैरह ठीक आ रही सबको? Hi Nikhil, how are you, Brian? How are you, my friend? Hey Gulazzo, how are you? Welcome everyone. Daksh bhai, कौन से subject से study कर रहे हो Ireland में? I will get to that. So guys, of course, this is a 1,000 sub stream, and even if it's 5 or 6 of you, I will answer any and all questions that you have. चल रही है जिंदगी बस, बहुत ही बढ़िया. So ऋषभ भाई, I am doing my PhD in Ireland, in Dublin, in this university called UCD, University College Dublin. It's one of the best universities in Ireland and probably Europe as well. So my PhD is in cybersecurity and warfare. It is a combination of computer science and international relations and politics. That is what my PhD is in. But yeah, guys, how are you enjoying the World Cup अभी तक? कैसा लग रहा है? और कोई प्लीज एक बार कमेंट में बता दो कि आवाज ठीक आ रही है नहीं. हे अभिजीत, हाउ आर यू मैन? नाइस टू सी यू. फर्स्ट क्वेश्चन, गर्लफ्रेंड है आपकी या सिंगल हो? भाई गर्लफ्रेंड है मेरी. डोंट, नो प्रॉब्लम्स. आई हैव हैड अ गर्लफ्रेंड फॉर नाउ मोर देन 3 years. 12th में कितने परसेंट आए थे मेरे यार? अब 12th को तो 10 साल हो गए मेरे. 12th में आई हैड, I think 85.8% या 88.5, one of those two. I don't remember exactly. Bhai, can Japan qualify? I want them to. देखो, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि जितनी नॉन यूरोपियन टीम्स क्वालिफाई करें उतना ही बेटर है. सो दैट्स गुड फॉर मी यार. इफ जापान क्वालिफाइज इट विल बी ग्रेट. दे हैव टू बीट. यार कोस्टा रिका के अगेंस्ट उन्होंने इतना गंदा बॉटल कर दिया ना, मेरा मन उठ गया उनसे ऑनेस्टली. 10th में कितने आए थे? 10th में मेरी, तब मेरा ये सीसीई करके नया था, तो आई थिंक मेरी 8.8 सीजीपी आई थी. इज शी इंडियन और फ्रॉम आइलैंड? शी इज इंडियन, माय फ्रेंड. दैट इज व्हाई फॉर 3 years, मोर देन 3 years आई बीन विद. हाउ मेनी एक्स? भाई तुम लोग को क्या लव लाइफ में पड़ी रहती है क्या? आई थिंक इट्स सिंगल डिजिट्स ओनली. I would say five maybe. I think so. Can we see Saliba playing? Maybe in the next game, yeah. Now that France is qualified, I expect Konate and Saliba to play a little bit. But यार कुछ कह नहीं सकते. Sometimes आपके players की momentum ऐसे होते हैं कि you don't want to break that momentum, right? And आपके players अगर अच्छे खेल तो खेलने दो. But injury हमेशा risk होती है. So I hope Saliba plays, man. आप इतने हैंडसम कैसे बने? भाई मैं रोज 2 बार नहाता हूँ and I take very good care. I wash my face every time I come from outside. And अब तो मैं अल्कोहल भी पीता हूँ काफी यार. But पहले, most throughout my days, I've never smoked. I mean, I smoked maybe for 3 months in my life. I stopped and never smoked, and I drank very less alcohol. फब्रिजियो ने डाला है ब्रूनो के गोल का. अच्छा, पता नहीं है मेरे को, ऑनेस्टली ट्रेसी, मेरे को नहीं पता.
But if that's the case, chalo theek hai, maybe they want it. I don't think Bruno cares, or I think Ronaldo also doesn't care, to be honest. 2-3 दिन से मैचेस नहीं देख पाया. I have illness. यार, I'm so sorry, Sanket, man. But yeah, we all have a reasons जिसकी वजह से हम मैच नहीं देख पाते. तो I know, like for me, it's study and work, and I can't watch all the matches. मैं सिर्फ 7 बजे, जहाँ के जब 7 बजते हैं, मतलब इंडिया के 12:30 बजे वाले मैचेस ही देख पाता हूँ, अनफॉर्चुनेटली. भाई, कैसे कैसे मिले, कैसे बात की आपने, लव स्टोरी बता दो यार. ये सब थोड़ा सा पर्सनल है, बट चलो एंड में इफ आई फील I'll share. But to be honest, it's nothing that great, but that's a personal thing. Japan can qualify if they beat Spain, but too tough to beat Spain. हाँ यार, मैं वही कह रहा हूँ. Spain would want to finish the group stage completely unbeaten. And I think winning all. अब तो चलो जर्मनी के अगेंस्ट ड्रॉ हो गया, बट दे वांट टू विन द थर्ड गेम ताकि नॉकआउट्स के टाइम मोमेंटम हो जाए. यू आर राइट, रिक. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर जापान टू बीट Spain, but I think before the Germany game also, Japan thought ki, you know, is it difficult to beat Germany? But they ended up beating Germany, so I don't know. Ask me anything, पंगे करने लग गए. हाँ यार, I know what I was getting into. I was expecting a little bit personal questions, but नहीं यार, एक एक जगह तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है ना. जस्ट नाउ फीफा ने बोल दिया रोनाल्डो का टच नहीं था. हाँ, तो बस अब जो है सो है. भाई, यूएसए ईरान, आई वांट ईरान टू विन, मैन. आई वांट ईरान टू विन सो बैड. आई डोंट नो, मुझे यूएसए की टीम देख के खुंदक आती है, पता नहीं क्यों. आई जस्ट डोंट लाइक दैट टीम, इवन दो दे हैव सम गुड यंग प्लेयर्स. आई रियली लाइक हैरिसन, एरनसन. यार, काफी सारे अच्छे प्लेयर्स हैं यूएसए के, बट आई वांट ईरान टू विन, मैन. आई वांट ईरान टू विन. It's also because, you know, Asia team is qualifying, but also because Iran के personally इतने struggles हुए हैं, considering what's happening in their country. So I want Iran to really win. Since Saka is starting for England, is it beneficial for Arsenal or not? हाँ भाई, I think I was a little torn on this कि क्या Saka को start करना, is it good for Arsenal? And I was like, नहीं यार, injury हो जाएगी. But भाई, if you have good players, they will play in big tournaments. They will play and have the ability to shine in big moments. तभी वो player की progression होगी. Player की progression सिर्फ club से खेलने से नहीं होगी. You want to have winners on your team. You want to have players who step up in difficult moments. जो experiences साका इंग्लैंड से लेके आएगा. फॉर एग्जाम्पल, याद है जो पेनल्टी मिस करी थी, उसके बाद से साका ने एक भी पेनल्टी मिस नहीं करी है. तो वो जो इतना डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था, that taught Saka a lot about handling pressure, and I think it can only be a good thing that he's playing for England. आप इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट? हाइट, बिग 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 टाइम इंट्रोवर्टेड भाई, बिग टाइम इंट्रोवर्टेड. मुझसे हाई एनर्जी लोग नहीं संभाले जाते. जब बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, आई गेट एंग्जाइटी टाइप्स हो जाते हैं मेरे को. तो मैं सुपर इंट्रोवर्टेड. Which team I am supporting? I'm supporting Brazil. I was also supporting France, but I just never. I think after Benzema's injury, I was like, as chodo. But man, France, what a team! Yeah. What a freaking team! So I think I'd still support Brazil. Hey buddy, how was your day today, bro? It is only 11:30. I woke up 5 hours ago, and I went for a good long run. थोड़ा नाश्ता वाश्ता बनाया, एक वीडियो रिकॉर्ड करी, थोड़ी पढ़ाई करी, and now I'm here live. Was it Ronaldo or Bruno? Bhai, some people are saying that people are Portugal is appealing for it to be Ronaldo's goal, and FIFA is saying nahi bhai, it's Bruno goal. I don't know, man. I think it should be given to Bruno. वो रोनाल्डो की 3 बाल छू के गया है यार. It shouldn't be a goal. Saudi Arabia still has to qualify. हाँ भाई, Rick, you're right. Saudi has still a chance to qualify, and I want them to qualify again. Again, जितनी टीम एशिया से जाएंगी, जितनी टीम अफ्रीका से जाएंगी, दैट विल मेक मी सो हैप्पी, बिकॉज ये टीम्स इतनी डिसरिस्पेक्टेड होती हैं. इट्स ऑल अबाउट यूरोपियन टीम्स, एंड उसके बाद साउथ अमेरिकन एंड नॉर्थ अमेरिकन टीम्स. आई वांट एशियन टीम्स एंड अफ्रीकन टीम्स टू गो रियली फार इन दिस टूर्नामेंट, एंड नथिंग वुड मेक मी हैप्पी. अब साउथ कोरिया का हो गया थोड़ा डाइसी, बट आई इट वुड हैव मेड मी सो हैप्पी अगर सारी एशियन टीम्स नेक्स्ट राउंड तक क्वालिफाई कर जाती. गुड दक्ष भाई, कंग्रेचुलेशन फॉर 1000K. भाई 1000K तो नहीं है, बट इट्स 1K, बट 1K इज better than zero, and I'm so happy and I'm so lucky to all of you guys, man. um Good evening.
हे बडी, हाउ वाज योर डे? हो गया है. बेस्ट प्ले फॉर मी अप टिल नाउ. द बेस्ट प्ले फॉर मी अप टिल नाउ हैज बिन Kylian Mbappe, undoubtedly. And I know ये controversial choice नहीं है. I'm pretty sure a lot of people have Kylian Mbappe chosen. तो मेरे को तो लगता है Kylian Mbappe है. If you ask me for an underrated player who has been playing really good, Musiala is also playing really good. I think Enzo played really good with the game he came on. Ener Valencia is playing very good, by the way, guys. I know Ecuador hai, maybe not many teams are, not many people are focusing on him, but Ener Valencia is playing really good. Yeah. I think it touched Ronaldo's head. I don't think so, Aman. I think it maybe if just glance it कभी-कभी ऐसे ऐसे करके चली जाती है. But I don't think he had that big an effect on the trajectory of the ball. ना बॉल मेरे को लगता है थोड़ी सी ऊपर उठी, ना डायरेक्शन थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि यार वो रिप्ले में ना बॉल का स्पिन भी चेंज नहीं हुआ मेरे को दिखा. कभी-कभी होता है ना कि बॉल ऐसे जाती है तो इट स्पिन्स एंड चेंजेस समथिंग, बट मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगा. ब्र ब्र यस, वी हैव डन दिस. मोहक भाई से आप कैसे मिले? एसेंशियली मैं निधि भाई से मिला थ्रू मानस, एंड मानस और मेरी अलग से मीटिंग हुई थी. सो आई मेट निधि भाई एंड देन आई केम ऑन निधि भाई's channel, and then I started engaging with the community a little more. एक दो बार मोहक भाई के स्ट्रीम पे कमेंट कर दिया था. देन आई स्पोक टू निधि भाई अबाउट इफ आई शुड स्टार्ट अ चैनल. फिर मैंने चैनल स्टार्ट किया, गॉट निधि भाई ऑन इट. And then I asked him if I can get Mohak or somebody on it. And उसने मोहक का नंबर दिया. मोहक की तब तबीयत खराब थी initially when I reached out to him. But he's been a great friend यार. Honestly, इतने कम टाइम पे मोहक भाई has helped me so much. I'll always be grateful for him, for Nidhi bhai, for Manas bhai, and of course, all other creators who uh, I've come on their channel. Drog Baba, of course, हो गए उनमें से. And hopefully more collaborations will keep coming. पोर्चुगल जीत गई, हो इम्पोर्टेंट है. हाँ भाई, पोर्चुगल का जीतना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक टीम जो आई थिंक मैंने बाबा की वीडियो देखी थी, मेरे को आई डिडंट रियलाइज दे प्लेड द क्वालिफायर्स फॉर द वर्ल्ड कप एंड दे प्लेड सो वेल. वन ऑफ द 3 टीम्स जिसने अपनी दोनों गेम्स जीती हैं. डू यू गाइज थिंक कि पोर्चुगल ने सिर्फ इजी टीम्स फेस करी? आई डोंट थिंक सो. But it will be very interesting if they come up eventually in the tournament against a France or a Netherlands or a Brazil or a Spain. बहुत इंटरेस्टिंग होगा. आयरलैंड पे आई एम गेसिंग तुम पूछ रहे हो मच्छर. मच्छर नहीं होते यहाँ पे, बिल्कुल भी मच्छर नहीं है यहाँ पे. थैंक्स सो मच मयंक भाई. 1K, यस, थैंक यू सो मच. Apologies, typo mistake. No problem, bro. FIFA analyzing Bruno result in few hours. I don't think it requires that much of an analysis, but I think neither of them care. Neither of them really care कि क्या हो रहा है. In which country you are right now? I am in Dublin in Ireland right now. So it's a European country right next to the UK. And please, if you ever go out, never say Ireland is a part of UK. ठीक है? बहुत. Northern Ireland is a part of UK. Republic of Ireland is not a part of UK. Congrats on 1K subs. Bhai, 10K will come soon enough. I hope so, my friend. Old school purist, you've been there. You've been one of the OGs. Thank you so much for your subs and support. Yeah, hopefully 10K soon. Pep or Arteta? In terms of what? In terms of managerial quality, I would say Pep. In terms of player, it's a toss-up. दोनों ही अच्छे हैं. But I think, of course, Pep. Yeah, Pep. Let's not kid ourselves. Pep is leagues ahead of Arteta right now. Subscribe to A for Arsenal because we are close to 100K, only 99K left. Bhai, we are actually not that far away from 1.1 to be honest, you know. कल मोहक भाई ने एक जल्दी जल्दी करवा दिया था. And I know whoever's in this chat right now is mostly a subscriber. तभी आपको notification आई है. But yeah, we're not that far from 1.1K. So I'll keep collaborating with others. Hopefully, I'll attract new viewers. And yeah, 1.1K soon. What is more crucial or required signing for Arsenal in January? A midfielder or a winger? I'd say a midfielder, bhai. Because I talked about this in my last video. जिस intensity से हमारे players खेल रहे हैं, especially Ghana, if you watch the last match. Partey injure होगा. I am telling you this right now. Second game after coming back from the World Cup, he is going to get injured. या फिर वो ट्रेनिंग में ही इंजर हो जाएगा. गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं हो, बट होगा. एंड वी नीड अ मिडफील्डर. विंगर हम किसी ना किसी तरह कवर कर लेंगे भाई. गैब्रियल जेसूस खेल सकता है विंग पे, फाबियो वियरा खेल सकता है विंग पे, मार्टिनेली दोनों विंग पे खेल लेगा, साका दोनों विंग पे खेल लेगा. अगर सिचुएशन बहुत ही डायर होगी तो हम पेपे को लोन से ले आएंगे.
बट वी नीड अ मिडफील्डर। हमारे यूथ में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी करे। Sambi is not that kind of a player who can take up the party responsibilities. So we need a player who I know अगर हम डनीलो भी ले आएंगे, he is not going to be the party equivalent, but भाई we need a new midfielder because current options तो काफी नहीं है. Goalkeeper didn't come to collect as Ronaldo was heading the ball. I think that was because he was expecting Ronaldo to head it in a particular direction, but उतना contact बना नहीं भाई. So I still think it's a Bruno goal. Astrology में नहीं भाई. I do not believe in how position of stars affects it. But if you believe in it, good for you, man. मैं ना किसी का मजाक उड़ाता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ. When will St. Tottenham's Day be celebrated again? भाई मेरे को लग रहा था last season हो जाएगा. But hopefully this season, man. Hopefully this season. Do Arsenal fans feel little special about Golden? Bhai, you always feel special about records that are only your own. United का treble वो भाई वो कुछ भी हो जाए, चाहे लिवरपूल लीग जीत जाए, they don't want Man City to break that treble वाला record. Same with Arsenal यार, जिस दिन सिटी हारती है, लिवरपूल हारती है एंड उनका वो 100% रिकॉर्ड खत्म हो जाता है ना, आई सेलिब्रेट छोटा सा, इट्स लाइक अ छोटा सा, बिकॉज आर्स इज गोल्डन एंड नोबडी हैज अ गोल्डन प्रीमियर लीग ट्रॉफी. Uruguay and Ghana both were tough. Yes, Uruguay and Ghana both were tough. But unfortunately, I think Ghana तो जीत गई थी. But Uruguay यार. Okay, अच्छा, you're talking about Portugal, right? I think yeah, both were tough, but I think Uruguay made it much easier for Portugal and Ghana ने भी. Ghana were little unlucky, I'd say. But yes, I think Portugal ने अच्छी teams खेली हैं. कहाँ तक जा सकती है Portugal? I won't be surprised if they're there till semi-finals. Portugal is a cup team की जैसे होती है ना cup team. जो कुछ टीम्स होते हैं जो कप में बहुत ही अच्छा करती हैं. आई थिंक दैट्स पोर्चुगल बिकॉज दे हैव इनफ क्वालिटी ऑन देयर बेंच ऑन देयर फर्स्ट 11 कि वो एक मोमेंट ऑफ मैजिक से एक गलती का एडवांटेज लेके गोल एंड दैट इज इट. प्रॉब्लम यही है कि पोर्चुगल स्विच ऑफ बहुत हो जाते हैं और हमने कल यूरुग्वे के अगेंस्ट भी देखा था व्हेन गोमेज ऑलमोस्ट स्कोर्ड व्हेन बेंटर को ड्रिबल करके काट के सबकी ले गया था. सो या think Portugal get one of the most difficult groups. I think I will agree with this. Yes, I think Japan wala group is काफी interesting, but I think this is the second toughest group, if not the toughest. अर्जेंटीना का बोथ मैच देख के लग रहा है हार्ड टीम के सामने बिल्कुल नहीं ठीक पाएगी यार. वो ना होता है, सबको लगता है कि जैसे ही अच्छी टीम आएगी क्या करेंगे. एंड ये आर्सेनल के साथ भी काफी सारा हो रहा था बिकॉज व्हेन वी प्लेड ब्रेंटफोर्ड पैलेस, गॉड नोज व्हाट अदर टीम्स वी प्लेड, सब कह रहे थे यार ये तो इजी है, जैसे ही एक रियल टेस्ट आएगा आर्सेनल विल क्रम्बल. बट वी बीट लिवरपूल, वी बीट चेल्सी, यूनाइटेड से हम हार गए, राइट, वी बीट टॉटनहम. सो ऐसा लगता है बट समटाइम्स यू नो ईदर यू डोंट टेक अ टीम सीरियसली, जैसे अर्जेंटीना ने सऊदी को सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया अपने फर्स्ट गेम में, वो दिख रहा था मुझे. बट जैसी बड़ी टीम आती है देन प्लेयर्स ऑटोमेटिकली स्टेप अप देयर गेम्स. देखो भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, कोपा अमेरिका जीतना आसान नहीं है. एंड द फैक्ट दैट अर्जेंटीना वन इट विद अ सिमिलर स्क्वाड शोज दैट इन बिग मोमेंट्स दिस टीम कैन शो अप. तो मुझे मुझे लगता है अर्जेंटीना कैन टर्न अप गुड. कौन सा मोबाइल यूज करता हूँ? आईफोन 13 प्रो मैक्स माय फ्रेंड. और ये मेरा फोन, मेरे इससे पहले वाला फोन 7 प्लस था आईफोन. तो मैं फोन 4-5 साल चलाता हूँ इजी. Ireland has a football team. Yes, they have a football team. They don't play in the World Cup. अभी मैं सोच रहा हूँ guys that I will go to the local League of Ireland, जो आयरलैंड की प्रीमियरशिप है, जहाँ पे एक टीम है सेंट पैट्रिक्स एथलेटिक करके. I will read about it. I will try and visit the club and maybe I'll go for a few match days and I'll vlog that stuff. और अभी तो I think league suspended है, मतलब खत्म हो गया, जनवरी में रीस्टार्ट होगा. And I'll also go for a few Gaelic football matches. वुड यू टेक फीलिक्स? भाई हाथ जोड़ के पैर पड़ के घुटनों पे जाके सर फोड़ के आई वुड टेक फीलिक्स इन 1 second. 1 second. He has been my favorite young player for such a long time. I would do anything for Felix at Arsenal. मोस्ट ब्यूटीफुल कासल इन आयरलैंड भाई मैंने अभी तक एक ही देखा है. वो उनका रॉयल कासल है जो सिटी के अंदर ही है, जहाँ पे इंग्लिश रॉयल्टी बैठती थी. इट्स अ ब्यूटीफुल कासल. दक्ष भाई एंजो फर्नांडिस को ला दो, कहां से लाए भाई? एंजो फर्नांडिस इज गुड बट आई थिंक इज गोइंग टू गो टू चेल्सी. ये तो हो गया.
आर्सेनल आर लिंक्ड टू पीएसजी मिडफील्डर कार्लोस सोलर। भाई आई थिंक अभी लिंकेजेस तो काफ़ी होंगी, बट आई ट्रस्ट whoever we get, man. I think a recruitment team ने apart from a couple of blunders like Willian and maybe Pepe for a few years, काफ़ी अच्छा किया है. So I think it's good. Do you think Arteta extends? Yes, he will extend. If Pep is not going anywhere, Arteta is not going anywhere. ये मेरा मानना है. Locatelli after the Juve collapse. Oh yes, Locatelli would be great as well. Juve ka they look like they're in trouble. So yeah, man. Hi Vishal, how are you? One of the OGs as well. Bayern statement releasing they will not sign Ronaldo and Jan. It's weird for me that clubs have to release statements saying we will not sign this player. इट इज फकिंग absurd टू मी कि आपको ये करना पड़ रहा है भाई. नहीं साइन करना मत करो ना. दिस इज लाइक वो लोग नहीं होते जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं, आई एम लीविंग इंस्टाग्राम राइट नाउ, इफ यू हैव टू रीच आउट टू मी व्हाट्सएप ओनली. भाई निकलना है निकल लो ना, सबको अनाउंस करके क्यों निकलना है. Would you rather prefer Arsenal winning the Premier League, Champions League? Few Premier League fans prefer the Premier League. I would prefer Premier League, man. It's been a long time, more than a decade since we won the Premier League. More than two, अब 2 decade हो जाएंगे भाई, है ना. ओ फक 3-4 साल में 2 decade हो जाएंगे. नहीं नहीं, वी नीड टू विन द फ्रिकिंग प्रीमियर लीग फर्स्ट, मैन. चैंपियंस लीग विल कम. Shaka's performance review for yesterday's game, he was doing very well. मैंने ऑनेस्टली बताऊं, मैंने स्विट्जरलैंड ब्राजील वाला गेम नहीं देखा बिकॉज आई हैड अ मीटिंग. मैंने सिर्फ फर्स्ट हाफ देखा था आई थिंक, एंड उसमें शाका वाज डूइंग डिसेंटली. सो बट या मैन, आई कुडंट वॉच मच ऑफ द गेम, सो आई एम सॉरी आई कांट गिव यू रिव्यू. क्या हाल? एकदम बढ़िया एडू स्टाफ. हाउ आर यू माय फ्रेंड? Have you seen Aisho Speed's video? Which video, man? I don't really follow Aisho Speed that much, but if you tell me which video, I can check. Felix doesn't seem like a player that would thrive in the Prem. Yeah, but that's a risk with any player, right? Some players just are better in a specific country or a specific system, and जैसे ही वो England में आते हैं, they just don't fit in. But yeah, it's a gamble I'd be willing to take. He's going to be super, super expensive. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam, my friend. Uh, it is a game to game, not two legs, so any big team can win. Exactly, my friend Harsh. Um, you should not take too much stock in momentum and past performances, but I think it plays a little effect on your mentality and आप कैसे perform कर रहे हो. भाई एक जेन्युइन क्वेश्चन था मेरा, एंड 1.5 year हो गया फुटबॉल करे हुए. मैं एक टैक्टिकल बुक लूं इन ऑर्डर स्ट्रॉन्गर माई टैकलिंग नॉलेज बाय ऑब्जर्विंग हाई नंबर ऑफ मैचेस. आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू हैव बुक्स. I am a big believer कि you can get a lot of knowledge from books. I think if you search online, आपको काफ़ी सारी books मिल जाएंगी to read on tactics. कुछ बहुत high level है. I think Inverted Pyramid ऐसे is a high level book, but there are very easy to read also. Some of them आप Google कर लो, आपको अच्छे से मिल जाएगा. Uh, Hi Bang Bang, how are you? One of the OGs. Yo Yo Daksh Bhai, Yo Yo Abhinav, how are you? One of the OGs again. It's nice to see all of you in the chat. बहुत मजे आते तुम लोगों को देख के. I'm Rafia Siddiqui, your new friend. Hi Rafia, how are you? What is harder to win, three-peat PL or three-peat CL or single World Cup? Hmm. Three-peat CL is pretty difficult, man. Knockout competition है. आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट से खेल रहे हो, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हर साल इम्प्रूव करते हैं. आई थिंक इट्स डिफिकल्ट. 1 इंच वाला जोक सुन के अभी भी हंस रहा हूँ. अरे यार भाई, 1 इंच में कमाल कर देता है. इफ यू नो यू नो. वेयर इज योर होम टाउन बैक इन इंडिया? इट्स इन गुड़गांव इन हरियाणा, माई फ्रेंड. आई वॉज born in Delhi, but I've lived most my life in Gurgaon. I've been living in Gurgaon since 1999. Which club you'd follow after Arsenal, not as a fan, but you'd like watching outside the Prem? Outside the Prem? Good question. आई लाइक डॉर्टमंड. मेरे को डॉर्टमंड का प्ले स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली जो यर्गन क्लॉप, पीटर बॉस, थोड़ा बहुत लूसियन फेवरे वाला भी. आई लव वॉचिंग डॉर्टमंड. नो नो साउंड. आर यू सीरियस? अब आवाज़ आ रही है भाई? एक बार कोई कमेंट पे लिख दो आवाज़ आ रही है या नहीं प्लीज़. नीड अ PNP forward, bring Leo. Leo is very hot and cold, yeah, Mayank. I have noticed this that some games he's really good, almost unplayable. And but some games like yesterday, I don't know, man.
वो hot and cold वाला we've already had with Pepe, but yeah, Leao, he's too young also. The fact that he's young, he can always change and mature. So Leao is also a really good shout, bhai. For everyone, it's either CR7 or Leon Messel, but for me, Kaka best player since my childhood. Bhai, Kaka, whoever has seen Kaka play at his peak, you have to love Kaka. I think also एक underrated था, but if people remember Alexander Pato, भाई Pato क्या अभी भी खेलता है? Pato still plays, but Pato when he was young without the injuries was amazing, bhai. Would you want Leo at Arsenal at this age? Bhai, I would want Leo at any age. Any team in the world would love to have Leo Messi. And whoever is saying no is lying. I can tell you this much. Same can be said about Premier Leagues to other leagues. Prime example, Hazard. हाँ यार, Hazard, Alexander Hilab, एलेक्स सॉन्ग. मैं तो सिर्फ आर्सेनल प्लेयर्स के नाम दे रहा हूँ, बट बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बाहर जाके उतना परफॉर्म नहीं कर पाते, बट कुछ लोग कर भी लेते हैं. आप जिरू को देख लीजिए. ही इज बीन गुड एवरीवेयर ही इज बीन, टू बी ऑनेस्ट. पोर्चुगल उरुग्वे में फर्स्ट गोल था रोनाल्डो और ब्रूनो. आई थिंक इट्स ब्रूनो, बट पीपल आर सेइंग इट्स बीइंग रिव्यूड. आई डोंट नो. बैंग बैंग. I would say it has to go to Bruno because I think yeah, Ronaldo it just glanced over his head. Shouldn't be given. Um, okay, what's your age? I am 28. I just turned 28 last week on the 21st of November. So that's my age. How and when you started supporting Arsenal? I started supporting Arsenal in 2000 or 2001 जब मैं FIFA 2000 खेल रहा था. And demo था मेरे पास. You could only pick from two teams, that was Arsenal and Real Madrid. मैंने आर्सेनल चूज करी बिकॉज ऐसे. एंड ठीक है, आई प्लेड दैट गेम अ लॉट, फीफा 2000. उसके बाद मैंने फुल गेम ली, मैंने फिर भी आर्सेनल से खेला. फिर मैंने फुटबॉल देखा टीवी पे सेम ईयर, एंड काफी सारे नेम्स जो आर्सेनल के उस गेम में थे मेरे को फेमिलियर लगे. अरे अरे ये तो ये है. एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड वाचिंग एंड आई जस्ट फेल इन लव विद द क्लब. ऐसे ही रीजंस होते हैं यार सबके. somebody likes a player, somebody just comes across a team and you just love it. जैसे the first team I came across in NBA in basketball was the Milwaukee Bucks. And बहुत साल तक बहुत टट्टी टीम थी, but now Milwaukee Bucks are one of the best teams. Napoli is cooking. Yes, if you're outside the Premier League, Napoli is amazing to watch. आ रही है आवाज? Sound is perfect. Yes, very clear. Thank you so much, guys. मिक्सर अच्छा होगा क्या? आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, बिप्रा. कैन यू जस्ट, मैं समझा नहीं. आई एम सो सॉरी माय फ्रेंड. One Arsenal's moment in signing you can reverse from history. You can, and which would? I think a moment that I would reverse is Almunia ka red card against um in that Champions League final. I wish we had won that. I really wish. अगर अल्मुनियो को रेड कार्ड नहीं मिलता हम जीत भी जाते. बट उस दिन बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था थियरी ऑनरी का. एंड इफ वन साइनिंग आई कुड रिवर्स फ्रॉम आर्सेनल्स हिस्ट्री, बहुत है यार. सम प्लेयर आई विश वी नेवर गॉट. आई थिंक नहीं यार, पेपे. आई लाइक पेपे एज अ पर्सन. आई कांट से पेपे. सो कौन सा प्लेयर यार? आई वुड से टोरेरा. बहुत तंग किया उसने, बहुत तंग किया. ही इज बीन अ ग्रेट प्लेयर बट ही जस्ट मिसेस हिज होम टू मच. क्रिकेट देखते, आई हैव नॉट सीन क्रिकेट सिंस आईपीएल 2010 मैन. मेरा मनी उठ गया. वो इतना कमर्शलाइज हो चुका है क्रिकेट. It's all about the money. I've seen players more on TV and ads than on the pitch. And ये personal political sort of एक internal politics हो गया cricket में, जो it's just made it very filthy and dirty for me. I don't follow cricket anymore. I'm sorry. According to you, which will win the World Cup? I think Brazil or France. I think that it'll be Brazil or France, 100%. Baba live sub count. By if he's getting 100k, it's huge, yaar. He works very hard. Daily content banate hain and he deserves all this. So if you've not subscribed to Baba, which is almost impossible to think, so please go and subscribe to Baba bhai. Your views on last season's Champions League final? I mean, I watched it as a neutral. I enjoyed it. I really don't have many more views. If there's a specific question, Aditya, you can ask me. Yeah. Where are you working at? I am mostly studying most of the time. I'm doing a PhD, which is in itself work at UCD in Dublin, Ireland. Otherwise, मैंने पार्ट टाइम जॉब भी करी हुई है, साथ में कर रहा हूँ मैं.
कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच ज्वालामुखी, नाइस टू सी यू भाई। आप मोहक से कैसे मिले? मैंने भी जैसे बताया, निधि भाई इंट्रोड्यूस्ड अस एंड आई टेक्स्टेड हिम एंड आई रीच्ड आउट टू हिम रिगार्डिंग अ वीडियो एंड वी रिकॉर्डेड अ वीडियो। आई केम ऑन टू हिज लाइव, तो बस वहीं से भाई बात शुरू हुई मेरे और मोहक भाई की। Which languages do you speak? I speak Hindi, English, Japanese, and learning Portuguese. Understand why I like asking questions about languages. So I speak Hindi, English, a little bit of Punjabi, French, and I am learning German. But I also want to learn Japanese. But abhi ke liye itna hi kafi hai. But it's great, man. If you know so many languages, it's amazing. Why aren't there many Arsenal fan YouTube channels like yours? Nahi bhai, there is Mayank in the chat. You can follow Mayank for good Arsenal content. There are plenty of Arsenal YouTube channels भाई, अगर आप देखो फैंस्पायर एक लिवरपूल चैनल है, उस पे काफ़ी सारे आर्सेनल फैंस आते हैं. There is Rob and his team from the Away Gooners podcast. They do Arsenal content. तो हम ज़्यादा नहीं हैं, और हम अगर ज़्यादा हैं, हमें व्यूज़ ज़्यादा नहीं मिलते, बिकॉज फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आर्सेनल हैज़ बीन ऑन द डाउन. आई एम लकी कि मैंने इस सीजन डिसाइड किया था चैनल स्टार्ट करना, एंड आर्सेनल हैव बीन प्लेइंग रियली वेल, एंड आर्सेनल इज गोइंग टू गेट ऑल दिस अटेंशन. So I have just been very lucky with my timings, but there are people who have been making content on Arsenal for much longer than I have, and they also deserve 1,000 subs. Mustafa, yes, Mustafi is a signing um, I can always wish to reverse. Mixer एक book है, वो अच्छी है क्या? Based only on Premier League oriented tactics. I haven't seen the Mixer. Bipra, if you wait, let me just make a banner again. कि भाई पिपरा, इफ यू कैन डीएम मी ऑन ट्विटर इफ यू हैव ट्विटर, और इंस्टाग्राम इफ यू हैव इंस्टाग्राम. मेरे दोनों के हैंडल सेम है, एट ग्लोबल वॉफल्स. मैं भी बैनर डाल के कर लेता हूँ. जस्ट डीएम मी, आई टेल यू अ कपल ऑफ बुक्स यू कैन वॉच, और एनीबडी हु वांट्स टू नो कि भाई कौन सी बुक्स लेनी चाहिए आपको अगर टैक्टिक्स समझनी है. आई सजेस्ट यू अ कपल ऑफ बुक्स. मेरे पास अभी लिस्ट नहीं है, बट मैं देख के बता देता हूँ, मेरे फोन पे कहीं पे सेव्ड है. सो जस्ट डीएम मी हियर ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम. मैं आज नहीं तो कल तक तो रिप्लाई कर ही दूंगा, एंड आई टेल यू द बुक्स यू वांट. ठीक है, नो प्रॉब्लम गाइस. ओके, वेयर इज दिस? यस, Dennis Bergkamp, absolute legend of Arsenal. Yes, absolute legend. He's my favorite player of all time. All time favorite player is. Some people will say Thierry Henry. I love Thierry, of course. Who doesn't love Thierry Henry? But I think Bergkamp's my favorite player. रोनाल्डो टू आर्सेनल हो जाता भाई तो क्या लगता है इसी लेवल पर होता है, नॉर्मल प्लेयर की तरह उसका करियर जाता? कह नहीं सकते यार, हाइपोथेटिकली तो कुछ भी हो सकता है. अब मैं अगर कह दूं कि अगर रोनाल्डो आर्सेनल आता, he would have been much better than Messi. He would have been equal to Pele and Maradona. अब आप इसको डिस्काउंट कैसे करोगे? बिकॉज आप हाइपोथेटिकल कुछ पूछ रहे हो, मैं हाइपोथेटिकल कुछ आंसर कर रहा हूँ. रियलिटी तो नहीं है ये. सो आई कैन मेक एनी क्लेम एंड यू कैन बिलीव एनी क्लेम, बट आई थिंक वट एवर हैपन्स फॉर अ रीजन. आई थिंक रोनाल्डो वॉज डेस्टिन्ड टू गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. I think Martinelli was destined to come to Arsenal. I think some players are destined to go to some players. मैं डेस्टिनी में वैसे उतना बिलीव नहीं करता, but I think for some players it only has to work in some clubs, और कहीं नहीं. Rick Majumdar, your favorite player? Bhai Bipra is asking you, Rick. Which languages? Yes, we've done this. Who is bigger legend, Tony Adams or? Bhai, as much as I love Thierry, I would say Tony. Yeah, you have to have done something really good as a player to be called Mr. Arsenal. So, but यार दोनों के statues हैं बाहर Emirates के, so both of them are equal legends in my life. मानस को आप कैसे जाने? Manas and I were friends because of this very tricky girl situation we both found ourselves in. But at the end, the girl went out of the picture and me and Manas became friends. My favorite player of all time, like I said, is Dennis Bergkamp. My PhD is in cybersecurity and warfare. It's computer science and politics. Describe your feelings on पेन भाई. मैं स्कूल में था एंड whoever's been an Arsenal fan in school knows कि कितना बैंटर मिलता है भाई. मैं आया और मेरा फ्रेंड यहाँ पे ऐसे चिपका के आया था, मैन यूनाइटेड 8 आर्सेनल 2 एंड ही वाज अ यूनाइटेड फैन. भाई सबने उस दिन इतनी ली थी ना मेरी, और
4-0 के टाइम जब आर्सेनल 4-0 भी आ रही थी मैन यूनाइटेड से, तभी भी ली थी मेरी। बहुत बहुत बैंटर सा है भाई, बहुत बैंटर सा है। विडिच और वर्जिल? वर्जिल, although United fans would prefer Vidic, I think Virgil modern defender है, but या नहीं, you can't say. I think Vidic is also really good. मैं Vidic की भी याद नहीं यार, I can't choose. I'm sorry, I can't choose. Aditya. I really can't choose. I really can't choose. Do you drink beer? Lots of it, my friend, and I have to cut. Okay, bhai, sure. Thanks. Yeah, just DM me. Can you do a podcast with Sadiq bhai? Why he loves to hate Arsenal? There must be some PTSD. I will talk to him. I for sure will talk to him, and I will do a nice psychoanalysis on why Sadiq bhai hates Arsenal. Insta का same name है. Yes, both of them are the same. Guys, if you want to know a little bit more about my personal life, मैं Instagram पे डालता रहता हूँ. You can follow me on Insta. If you want me to live tweet again during Arsenal games and आपको मेरा गुस्सा देखना है, तो आप मेरे को Twitter पे follow कर सकते हो. Same handle है दोनों का, Global Waffles. Okay. कहाँ गए? Bro, are you a photographer? Part-time photographer? No, I am a hobby photographer. I love photography, but I do it as a hobby. Do you think Messi will win World Cup? I would want nothing more than Messi to win the World Cup. I would be happy. I think he is one player who deserves to win it. And जो पूरा उसका comparison with Maradona है, it will finally be complete. I think it is going to be a poetic ending. And I think अगर Messi World Cup जीत जाता है, he'll retire. I think he will not play football. He'll be like, fuck everything. Maybe one season in MLS and then he's retiring. He's done everything in life after that. I'm a United fan, but happy for Arsenal this season. Thank you so much, man. I am happy for Arsenal. And I'm happy for Man United, man. It looks like they're finally getting things right. So, yeah. Mohammad Bhai, my opinion on Arsenal. I think we find ourselves in the best possible situation to attract new talent, to get cover for our injury prone players. I still doubt the fact whether we'll win the Premier League, but I think we can go all the way. There will be a dip in form, I think, in February, which will create a lot of panic. And सब बोलेंगे same old Arsenal फिर से bottle कर रही है. But I think we'll finish top 3 if not top 2. I think Champions League is secure this season. आपको इसको clip करके मेरी काटने लग जाएगा once we bottle Champions League also. No, Bipra Singh Bergkamp is okay. Which team are you supporting in the World Cup? I am supporting Brazil, Vansh. I am supporting Brazil. Love triangle. Yes. No, man. It okay. I have made it sounded much more scandalous than it actually is. But me and Manas, we generally just started talking, and हमारे बीच में कभी कोई इल विल नहीं थी, ना कोई कंपटीशन था. आई वाज नेवर लाइक तू लड़की को क्यों लाइक कर रहा है. ही वाज नेवर लाइक तू लड़की को क्यों लाइक. नो, नेवर. इतना स्कैंडलस नहीं है. But there was a girl involved in the picture. But it's not that scandalous. Lionel Messi or Cristiano Ronaldo? Please, no diplomatic answer. I would prefer Ronaldo. I'll tell you one thing. Till about 2 years ago, I preferred Messi. Okay? Because I always thought कि natural talent है बंदे में is obviously better. As and when I've grown up, as and when I have done things in my own life, I realized the value of hard work. दोनों के डिफिकल्ट बैकग्राउंड्स हैं, बट जो मेहनत करके टॉप पे पहुंचता है ना, माय रिस्पेक्ट फॉर देम हैज grown up even multifold. Messi is a natural football player. He was born to play football. But Ronaldo worked hard to be one of the best in the world. So I would now prefer Cristiano Ronaldo. But please, Messi fans, that does not mean that Messi is terrible, okay? If Ronaldo is number one, Messi is 1.0001. That is, he's this close in my personal rankings. And whenever Messi is on the ball, see, that is why I want Messi to win the World Cup, right? I think he has had an amazing career. उसको देख के मजे आते हैं मुझे बहुत ज़्यादा. रोनाल्डो को तो I respect as a player. That is why he's number one in my rankings. What's your all-time Premier League team without any bias? If you're talking about a squad, I think the Invincibles. I know सब आप कह रहे हो without any bias, and I'm saying it genuinely without any bias. Now there are some great Premier League teams. That Jose Mourinho team जिसने पता नहीं कितने कम goals concede करे. That United team which won the treble, and those are great teams, यार. But I think invincibility nobody has achieved in the Premier League since then. अगर इतना आसान होता तो सब कर लेते.
I think invincibility is a bigger achievement. It's during the course of an entire season. Cristiano Ronaldo greatest gift, he just played beautifully in Manchester. He played beautifully in Manchester, he played beautifully in Madrid. I think Juventus was a slight decline, and then second wala to bhai, it's a little too sad now. Yes, thank you so much again. Uh, I am also an Arsenal fan. We are all Arsenal fans, my friend. अब तो monetize हो गया होगा नहीं भाई. There is no monetization simply because you need 1,000 subs and कुछ वॉच टाइम की भी रिक्वायरमेंट्स है विच आई एम अ लिटिल अवे. सो अगर आपने सब कर लिया है बट आप मेरी वीडियो सिर्फ 10 सेकंड के लिए देखते हैं, दैट डज नॉट हेल्प मी गाइस. अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इट्स रियली हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल टू मी, बट अगेन दैट इफ यू आर नॉट वॉचिंग माई एंटायर वीडियो दैट मीन्स मेरे को कंटेंट बेटर करना है. सो एवरी टाइम आई सी एनालिटिक्स, कभी कभी मैं देखता हूँ एवरेज वॉच टाइम सिर्फ 2 मिनट है या 3 मिनट है आउट ऑफ एन 11 मिनट वीडियो, तो मुझे समझ आता है कि मुझे थोड़े ज़्यादा इंगेजिंग कंटेंट बनाना पड़ेगा. सो आई लर्न दिस वे. बट या अभी मोनेटाइजेशन इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज मेरे को वॉच आवर्स बढ़ाने हैं. आफ्टर यस्टरडे मैच अकॉर्डिंग टू मीडिया टेंशन अरे बकवास, ये मीडिया ऐसी बकवास करती रहती है भाई, तुम लोग मत फंसो इस मीडिया के चक्कर में. हाउ फार यू सी पोर्चुगल इन द टूर्नामेंट? आई सी पोर्चुगल एज हाई एज द सेमीज. आई थिंक दे विल मीट somebody in the semis and then they'll eliminate, but I hope not. I would love to see Ronaldo and Messi go as far in the tournament as possible, but I'd love to see Brazil win the tournament. Casemiro, Rodri, depends on the system यार. अगर आप मैन सिटी की बात करो तो ऑब्वियसली रॉड्री, बट आप अभी स्पेन में देखो रॉड्री ठीक ही खेल रहा है. आई इनफैक्ट आई जस्ट रिकॉर्डेड अ वीडियो अबाउट मैन सिटी प्लेयर्स, उसमें मैं रॉड्री को मेंशन करना भूल गया, बट रॉड्री एट सेंटर बैक, रॉड्री एट सेंटर डिफेंस इज जस्ट, he's just not it, man. He's just not it for Spain. He's great for Man City though. What can be the reason Arsenal was not able to repeat its FA Cup successes in the UCL since both of them are knockout competition? I think the level of competition matters a lot. I think travel matters a lot. आप FA Cup में इंग्लैंड में ही जा रहे हो, you're going within the country, it's a short trip, there is less fatigue from travel. The quality of players of the opposition is not as much. And since you've played these English teams जो फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स में पहुंचते पहुंचते प्रीमियर लीग टीम्स ही होती हैं, आप उनके अगेंस्ट खेल चुके हो, यूर मच मोर फेमिलियर विद देयर गेम, you're much more familiar with the crowds and the stadiums and the environment and the weather. आप फिजिकल कंडीशन से काफी एक्लिमेटाइज्ड हो. जब चैंपियंस लीग आता है, आपको नॉर्थ पोल जाना है, आपको काजाकिस्तान जाना है, आपको चेक रिपब्लिक जाना है, आपको डिफरेंट बेलग्रेड जाना है, बेलारूस में बेलारूस जाना, कहीं कहीं भी जाना है आपको यार. तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट familiarity, which, and I also think the quality of Champions League teams is generally higher. By the way, I am a hardcore Real Madrid. Outside La Liga, I'd like to watch Arsenal United. Happy to see Arsenal this season. Thank you so much, Karan bhai, and great good luck to Madrid this season as well. Of course, historical club, काफी सारे fans हैं, and always respect to Real Madrid and their fans. See. Is Vinny Jr. third best youngster after Mbappe and Haaland? I would not say so. I don't think so. I think नहीं और कौन हो? Okay, let's actually think about it and let's not get biased about this. Mbappe, Haaland, number 1, number 2. और कौन हो सकता है? Musiala, too young. Saka, too young. Sancho, yes. Dortmund Sancho was really good, by the way. United Sancho hasn't been as good, but he's not been terrible. और कौन 22, 23, 24 साल का है? सोचो. विनीशियस तो है ही है उसमें. आई एम थिंकिंग Gavi, Pedri, I think they're behind Vinicius, but they'll get there. और कौन हो सकता है? Maybe Vinicius is the third best player after this. Yeah, looks like it. मेरे को तो अभी कोई याद नहीं आ रहा. If you guys have any other suggestion who's the third best young player after Mbappe or Haaland, please comments में डाल दो. Thank you so much, Manish bhai. Mod. Thank you so much. What's the current scenario with Manas? Me and Manas are really good friends, yeah. We go onto this channel. I go onto his channel. He makes videos with me. बहुत अच्छा. Me and Manas, we are watertight, man. अभी उसके साथ, निधि भाई के साथ, मोहक भाई के साथ, and maybe one more creator, we will have a very special series for you guys.
मानस भाई को बुलाओ चैनल पे. हाँ, I will call everybody on my channel one day. Don't worry. एक एक करके बुलाएंगे. I don't want to call Manas because तुम लोग फिर उस सिचुएशन के बारे में पूछने लग जाओगे, which I don't want. मेरे चैनल का वॉच टाइम 137 आवर्स हो गया था. Then I deleted all my videos to study and now I continue again and just हाँ भाई. You should not delete videos because it fucks with your watch time. So yeah, that is one of the things. Belgium announced Hazard and Courtois will speak at press conference today. Okay. बेल्जियम के अंदर कुछ स्क्वाड हार्मनी के इश्यूज हैं. आई थिंक सो. Why people are underrating the Dutch? Because the Dutch have been playing in an underwhelming way. They've grinded out wins. पहला गेम ठीक था, बट आई थिंक सबको वही लग रहा है कि यार बेटर डच टीम्स हैव कम टू बिगर टूर्नामेंट्स एंड वो फिर भी compete नहीं कर पाए. फाइनल्स में हार गए, सेमीफाइनल्स में हार गए. ये डच टीम माइट नॉट बी एज गुड एज दैट एंड काफी सारे यंग प्लेयर्स हैं इस डच टीम में. ये हो गया. इंग्लिश टीम्स ऑलवेज सर्वाइव इन फ्रंट ऑफ द स्पेनिश टीम. Yeah, I would say so, but not all the time. But yes, recently, huh? But you see, Madrid and Chelsea, Madrid pulled it off regardless of Chelsea ka comeback. Pulisic to Arsenal, no problem, no problem. I mean, no way that Pulisic should come to Arsenal. I loved Pulisic, but Chelsea जाके उसने अपनी legacy और career दोनों खराब कर दिया. He was so good at Dortmund. Pedri, Bellingham is also good. Darwin, yes, I personally like Darwin. Chouameni, not yet. Enzo Fernandez, Real Madrid's alternative if they can't sign Bellingham. They will sign Bellingham. Bellingham is either going to Liverpool or City or Madrid. 1 इंच का कमा 1 इंच का कमाल वाला. मोहक भाई की गालियां इज एपिक. उर्रे कुल 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 कुल. मोहक भाई के साथ वॉच अलॉन्ग करने में मेरे को ये मजा आता है बिकॉज इज रिएक्शंस आर ईदर ऑर्गेजमिक या फिर हॉरर कि उनको डर लग चुका है या फिर उनको ही इज अबाउट टू फिनिश. What after PhD? Obviously, यार, after this I can't do higher studies. PhD is PhD. उसके बाद maybe a postdoctorate or सीधा job. Let's see. Just a friendly suggestion. Please make a video on your best memories being an Arsenal fan. We'd like to watch. Well, even if you watch it, Karan, just for you, I will schedule it and I will record it tonight. I will do my best to put that video out. Best moment as an Arsenal fan. I think 4 or 5 moments should be fine. I think 5 moments should be enough. Okay, Man United enters the chat. They always get fucked in for Spanish team. Villarreal, Sevilla. History. अभी देखते हैं. अभी जो कह रहे कि स्पेनिश टीम्स आर बेटर देन इंग्लिश टीम्स, सम आर सेइंग इंग्लिश आर बेटर देन स्पेनिश टीम. अभी यूरोपा लीग में पता चल जाएगा हु इज बेटर देन हु. यूनाइटेड एंड बार्सा प्ले. मुसियाला, हाँ यार, आई थिंक ही इज गोना बी ग्रेट. Mbappe 1, Haaland 2, Valverde 3. Valverde is also a good shot, yeah. But ठीक है. देखा, you can't make very simple lists like that. So yeah. Yes, okay. Are you going to make vlogs in the future? I will. I'll probably start in January because the League of Ireland starts in January, as far as I've been told. And I might go to the stadium and I might go to the local community and I might engage with the local club here. So देखते हैं भाई. Something after PhD as well. Yes, there's something called postdoctorate, where you can expand on your research if you want to, or you can just get a job, or you can become a teacher. But postdoctorate काफी सारे PhDs करते हैं. Bro, love, how you guys get along? Yes, man, I love it. It's a very helpful and united community. I've never seen people go very angsty, jealous or anything. जो लोग अच्छे हैं, they only get good people and this community helps each other like anything. बहुत ही अच्छी बात है यार, मजे आते हैं. Do you think Man United have a chance to? हाँ. Now the fact that Man United can be sold, United के पास पैसे बहुत हैं, they can always get it. Real Madrid going for the 15th title, yes. Be historic again. Historic records are never a small thing for Madrid. So yeah. Thanks Nidhi bhai in the chat bhai. Sub hello Nidhi bhai लिख दीजिए please. Mudrik deal seems close. Yes, they say 40 million now. 40 million. If we get him for 40 million, मजे आ जाएंगे. भाई आर्सेनल वाले
हो तभी भूल गए, यूनाइटेड फैन से पूछोगे तो सबसे पहले मुँह पर बार्सिलोना का नाम आएगा, सैड नॉइसेस, सैड नॉइसेस। यस, भाई यूनाइटेड बार्सा के वो मैचेस, स्कोल्स ने गोल करा था, फिर बार्सा ने यूनाइटेड को 2 बार बीट किया, मज़े थे, मज़े। आयरलैंड में क्राइम रेट, स्टैटिस्टिक्स आई डोंट हैव, बट थीवरी इज़ अ बिग क्राइम इन आयरलैंड। यहाँ पे चोरी बहुत होती है। सो चोरी भी कैसे होती है? अगर आपने अपनी साइकिल बाहर पार्क कर दी और लॉक कर दिया, लोग लॉक तोड़ के निकाल देते हैं। सो मैंने यहाँ पे साइकिल नहीं लिया। आई यूजुअली वॉक टू प्लेसेस और टेक द ट्रेन और मेट्रो व्हाटएवर इट इज़। सो या, थीवरी इज़ अ बिग थिंग। रेसिज़्म, मेरे साथ सैटरडे को एक रेसिस्ट इंसिडेंट हुआ था। इट वाज़न्ट नाइस ऑफ कोर्स, but now I'm okay, now I'm fine. But there is some racism, there is some crime, but I think that is everywhere, man. India may be same ही चीज़ है, there is some racism, there is some crime. Thomas Partey is injury prone, so this winter transfer, which player? I think Danilo is saying, हम बात करें Danilo की and Mudryk की, and if we have both, then it will be 60 million. But bhai, I think this is the best time to have big signings or spend some money because we are top of the table, bhai. और अगर आप अभी साइन नहीं करोगे देन यू विल फॉल ऑफ इवेंचुअली, बिकॉज 100% चेल्सी इज गोइंग टू साइन, उन्होंने अंकुंकू ले लिया, और 100% यूनाइटेड आर गोइंग टू स्ट्रेंथन, 100% इफ लिवरपूल हैव द मनी दे विल स्ट्रेंथन, एंड सिटी का तो होता ही है, विंटर ब्रेक के बाद दे गो ऑन दिस 20 गेम विनिंग स्ट्रीक एंड दे विन। ओ हाँ गाइस, मेरे को ये करने की आदत नहीं है, बट आई एम गोना आस्क यू गाइस, प्लीज लाइक द स्ट्रीम एंड एंगेज कर दो। इफ यू नो पीपल हु फॉलो दिस, शेयर देम द लिंक, बिकॉज मैंने लाइक यू नो मैंने एक हफ्ते से अपलोड नहीं करे, एंड दैट इज माई फॉल्ट। मैंने ही अपने आप को इतना बिजी रखा हुआ है, बट मेरे को रीच बढ़ानी है वापस, आई हैव टू गेट बैक द सेम रीच। सो प्लीज लाइक द स्ट्रीम, and if you've not subscribed and you're just visiting and you'd like Arsenal content in the future, abhi World Cup I can't really post Arsenal content, it seems a little out of place, um, so please subscribe to the channel as well. Thank you Sandeep, man, 1000 subs is a huge thing, thank you so much, and thank you for being a subscriber. कैसे हो मेरे मेनेस एंड द मॉन्क के चैनल वाले? यस, हेलो निधि भाई, यस ऑफ कोर्स। मो साल और थियरी ऑन री एंड वाई इज इट? यार मेरा रोमांटिसिज्म तो थियरी के साथ ही रहेगा, बट आई कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड why people go for Salah. Salah is also a phenomenal player, absolutely phenomenal. How did you overcome the fear to show your face on YouTube? I think that's a very good question, man. You're asking amazing questions. I had a big fear about how I look, how I sound, what is around me, and how am I comparing to other people. मेरे अभी भी ये fears हैं काफ़ी हद तक. But I just realized I shouldn't care about the numbers. अभी मेरे स्क्रीन पे 19 लोग दिखे आर वॉचिंग दिखा रहा है, राइट? फॉर अ चैनल विच, चलो 21 हो गया, फॉर अ चैनल विच हैज 1000 सब्स बोलेंगे यार 100 लोग तो आने चाहिए, 200 लोग तो आने चाहिए, एंड काफ़ी सारे लोग ना ऐसे डिसहार्टन हो जाते हैं। मैंने जब फर्स्ट स्ट्रीम करा था, मैक्सिमम पीक बताऊँ कितना था? 11 लोग। एंड फर्स्ट वीडियो पे मेरे व्यूज़ इसलिए आ गए थे क्योंकि काफ़ी लोगों ने शेयर किया था, बट द फर्स्ट वीडियो विच आई मेड विदाउट एनी शेयरिंग, उस पे सिर्फ 39 व्यूज़ थे, एंड मुझे लगा मैं क्यों कर रहा हूँ, बट देन आई रियलाइज दैट it's just numbers, man. And even if there's 3 people um who are watching me, 4 people who are viewing my video, it's fine. Dekho bhai, my life, I like talking about football, I like talking about Arsenal. um this is what I want. I can speak about Arsenal for 3 hours. मेरे को अभी 2 घंटे में स्ट्रीम wrap up करना होगा, बट अगर मैं 6 घंटे भी स्ट्रीम कर लूँ, I can talk about Arsenal for 6 hours. And even if it's 0 viewers, I can prepare a list of things. I can go into detail about every match which has Arsenal in this season, and I can talk about it. मुझे अब बुरा नहीं लगता. So I think the reason I overcame the fear was I stopped caring about what other people will think. Some of you will really like me. Some, I don't know, maybe for some I might become the favorite content creator here. But for some of you I might not be, and that is fine. So I think jitna kam you focus on others and the more you focus on yourself, this fear to show your face,
दिस फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फियर ऑफ शोइंग फेस का मतलब क्या है? लोग जज करेंगे आप कैसे बोलते हो, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को. सो आई थिंक वंस यू स्टॉप केयरिंग, एंड इट्स, आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, बहुत डिफिकल्ट होता है उस मेंटालिटी से निकलना. So once you get over that, I think it becomes much easier. Mudrik is a must plus other reinforcement. I agree. Danilo and Mudrik will be perfect for me. Let's not forget, by the way, Vishal, if you're an Arsenal fan, let's not forget Emil Smith Rowe is coming back. He is going to be like a new signing. He's going to reinforce that midfield. So that's going to be huge as well. Bro, I love to Gujarat, India. I am from Argentina. FC Barcelona and Man City fan. Oh wow. Arsenal and Man United title race was super, bro. Love your video. Thank you so much, Yuvraj, man. Um, yeah, Arsenal and Man United rivalry has been really good over the years, and I can't wait for United to be better. Can't wait for Arsenal to be better and that rivalry to be reignited because that will be huge. You must start doing a podcast as others. Mohammed, the problem is, right? My first of all, the biggest problem is that my time zone is 5.5 hours behind India. So if I get free at 7 p.m. in the evening in here, तो इंडिया में 12:30 रात, सुबह के 12:30 बजता है. तो पहली बात, कोई पॉडकास्ट देखेगा नहीं. दूसरी चीज, अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक टाइम लूं, उस टाइम को बिगर क्रिएटर्स, बाबा के अब 100 के होने वाले, मोहक भाई, निधि भाई, उस्मान भाई, ऑल दीज गाइज, TCSB, all these people have टेकन इन दैट स्लॉट. तो अब अगर आपके पास चॉइस होगा कि आप बाबा के बारे में सुनो, बाबा एंड मुक्तेश एक स्ट्रीम पे हैं, निधि भाई और मोहक एक स्ट्रीम पे, और एक स्ट्रीम पे मैं हूँ, तो आपको पता है आपके पास एक ही स्क्रीन है, आपके पास दो ही आंखें हैं, आप कितने लोगों को सुन लोगे? सो आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट टाइम प्लेज अ ह्यूज रोल, एंड इवेंचुअली आई हैव टू ग्रो टू अ पॉइंट वेयर आई हैव अ रेगुलर लॉयल फॉलोइंग. अब मेरे अगर 20 लोग देख रहे हैं, इफ आई गेट अ 20 concurrent views every stream, देन आई कैन थिंक अबाउट इट कि 20 लोगों के लिए मैं पॉडकास्ट कर लूं, बट ऐसे मुश्किल है थोड़ा सा. विच यंग प्लेयर्स फ्रॉम करंट लॉट यूड लाइक इन आर्सेनल? करंट लॉट, ओके. इफ यू वांट जनरल रैंक प्लेयर्स, आईड वांट जा फिलिक्स, मूसियाला. यार ऐसे तो मैं कुछ ही बोल दूं, मैं विनी बोल दूं, मैं एम्बापे बोल दूं. इफ यू हैव अ स्पेसिफिक क्लब और अ स्पेसिफिक टीम, आदित्य, देन आई कैन आंसर. I think we'll make some big signings this summer, finally get into CL. I think we'll make some signings in the winter, then we'll get into CL, and then we'll make a couple more signings. But उसके आगे देखना पड़ेगा how we perform next season. Yes, he is the real Mo bhai. He is the better, he is the best Egyptian in the league. Your favorite Arsenal player of two, Ozil or Aubameyang? Aubameyang. What do you think why Unai Emery failed at Arsenal? I think he failed at Arsenal because we were used to the success of Arsene Wenger. And when Arsene Wenger stopped performing, he was sacked, and then Unai Emery was brought in. And we changed too many things too soon. हमने क्लब का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया. हमने उनाई एमरी को एडिक्वेटली सपोर्ट नहीं किया. उनाई एमरी वांटेड ज़ाहा, हमने उसको पेपे दिया. उनाई एमरी वांटेड अंकुंकू, हमने पता नहीं उसको क्या दिया. ही वांटेड सम स्पेसिफिक प्लेयर्स हु वर नॉट बिग साइनिंग्स, हमने उसको सपोर्ट नहीं किया. हमने मैनेजमेंट जो सानिया हीट थे उनको सपोर्ट किया, एंड व्हेन ही वाज नॉट बैक्ड द प्लेयर्स डिड नॉट रिस्पेक्ट उनाई. हमने उसके एक मोमेंट ऑफ गुड इवनिंग को लेके इतना बड़ा मीम बना दिया दैट एवरीवन स्टार्टेड मीमिंग हिम. सो आई थिंक ही वाज अ ग्रेट कोच, बट ही वाज एट द रॉन्ग क्लब, एंड आपको शायद से विला में दिख जाए व्हाट अ गुड कोच ही इज. Love your take on some players teams without being biased. You give your POV with utmost maturity. I try not to be clickbaity or generalistic or controversial. I mean, I have my own views. So thank you, Ankit. Those are very kind words. मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. एमिल स्मिथ रो को आर्सेनल में स्टार्ट क्यों नहीं मिलता? बिकॉज ही इज बिन इंजर्ड माय फ्रेंड. ही उसकी थाई, उसकी ग्रॉइन इश्यूज है. नाउ सम ऑफ इट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स इंजरीज एंड अदर्स रिलेटेड टू प्यूबर्टी. ही इज ग्रोइंग, उसकी लेग्स ग्रो कर रही हैं, एंड समटाइम्स आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ग्रो डिफरेंटली, एंड कभी कभी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है, स्पेशली इफ यूर इन अ कंपेटिटिव फिजिकल स्पोर्ट. सो ही इज बीन इंजर्ड, अभी उसकी सर्जरी हुई है, बट ही माइट बी बैक
after the World Cup. So I'm very excited for that, Roshan. He might start, I think, over Xhaka. Or maybe not. Maybe he'll be a good backup to Xhaka. जो हम कहते हैं आर्सेनल की बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, he's going to be an important player to come off the bench. Yeah, I'm an Arsenal. Yeah, Vishal. So I'm a Man City fan, not United. कोई नहीं bro, no problem, Yuvraj, no problem. Do you think United have a chance to sign Sesko? Yes, Sesko transferred last season only, right? Speed. I don't know if he wants to move again. I don't know how he's doing at Salzburg. If there is a United fan in the chat, you can tell me if you've been following Sesko and seeing कि वो क्या कर रहा है. Making an attractive thumbnail would benefit in each of your stream. Yes, अरे यार मैंने I don't know how to put a thumbnail before the stream. मैं तो impromptu start कर दिया. But you're right. Yeah, I'll work on the thumbnails. Thank you so much, my friend. Maybe you can take Osman Bhai on this as he is from Germany. Yeah, I don't know what Osman Bhai is doing, but maybe I'll talk to him about it as well. Yeah, don't worry. Thank you so much, Mohammed. I'll talk to Osman Bhai as well. You are doing great. Do it your own way. Keep making great content. Thank you so much for the kind words, Manash. As Man City fan, I'm happy Arsenal play very good, bro. Your team plays super from Man City. Yes, man. I think we play very similar to Manchester City. We just don't have Manchester City ke players. So it's just a question of what can we do? How can we improve and maybe get to that Man City level, not only in terms of players, but also in play style and trophies. Because Man City dominate every area of the pitch. Arsenal are not being able to do that and not being able to do that consistently. But this season seems like a big step up, yeah, Yuvraj. And I think this is the closest to Man City I've ever seen Arsenal play. Maybe in the future we'll keep improving. Emery's play style was never admired by Arsenal fans. We used to Wenger ball, and during Emery days, we were conceding 20 to 25 shots. I agree, Akarshan. We were conceding a lot of shots, and you're right. We were just too used to Wenger ball. And I also think that the players he was eventually given, they weren't specific for him. We were probably conceding 20 to 25 shots because he was just working with players he did not want. So yeah. Will Emery took Villarreal to semis last season, yes, and he won a European trophy the season before. Matlab, yaar, Unai Emery, he is a don. I love Emery, man. I love Emery. Is Newcastle United to become the next Man City? I think they're actually very different from Man City. They're not spending money like Man City. If you, I don't know आप में से कितने लोगों को याद है, बट मैन सिटी जब आया था उन्होंने इतने पैसे उड़ाए हैं, आपको यकीन नहीं होगा. अभी भी उड़ाते हैं, बट अब उनकी साइनिंग्स काफी स्मार्ट है. पहले सैंटा क्रूज, रोबिनियो, जो, योविटिच, अल्वारो नग्रेडो, विल्फ्रेड बोनी, और कौन था वो एवर्टन का प्लेयर, जैक रॉडवेल या गॉसलिंग, क्या नाम था, डैन गॉसलिंग, पता नहीं मेरे को, डैन गॉसलिंग कहाँ था पता नहीं. खैर जो भी, कोई एवर्टन से उन्होंने साइन किया था. जॉन स्टोन्स उस टाइम पे 50 मिलियन. नाउ जॉन स्टोन्स इज गुड नाउ, बट उस टाइम पे 50 मिलियन. डनीलो, क्लाउडियो ब्रावो. तो विन, चलो डेयोंग अच्छा है, नाइजल डेयोंग वाज अ गुड प्लेयर, बट दे हैड टू स्पेंड सो मच मनी टू फाइनली गेट इट राइट. That is all I'm saying, that City spent a lot of money and Newcastle aren't spending money foolishly. Uh, yeah, Speed, I am just naming players who they wasted a lot of money on. Mahrez and Stones, I think they are good players. Even though they spent a lot of money, they worked out for them. But so many players did not work out for them. Bonnie was 35 million, Negredo was 25 million, Robinho was 30 million, Santa Cruz was 35 million, Jovetic was 15 to 22 million. मतलब बहुत गलत साइनिंग्स करी हैं उन्होंने टू फाइनली गेट इट राइट, एंड बाकी टीम्स ये नहीं कर सकती. Which is why I think Newcastle are making smart signings, and Newcastle are not rushing into, because everybody knows Newcastle is the richest club in the world, but they're only going for players which they know they want, and they're making sure कि बाकी clubs उनको rip off नहीं करें, उनसे ज़्यादा पैसे नहीं मांग ले. Emery is more admired where teams play pragmatic football. We grew up watching dynamic. And from Arteta, yes, man, I think that's true. I think at some level हमारी भी ही गलती थी कि हम नहीं कर पाए उनसे अपने एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट. आई थिंक एमरी के बाद हमने सीख लिया कि हाउ लो यू कैन गो. अर्टेटा में भी इनिशियली हमने सीख लिया हाउ लो यू कैन गो, एंड
नाउ फाइनली हमने देख लिया कि पेशेंस करोगे तो मे बी इट वर्क्स आउट, एंड आई थिंक एंड आई जेन्युइनली ऑनेस्टली बिलीव दिस इन माय हार्ट कि even though Emery was not a, in hindsight, not a great manager for Arsenal, I personally like him. बट अगर हम एमरी को उतना ही टाइम देते जितना हम आर्टेटा को दे रहे हैं, और हम एमरी को उतनी ही साइनिंग्स देते जितने हम आर्टेटा को दे रहे हैं, आई थिंक एमरी वुड हैव आल्सो सक्सीडेड. वी वुड हैव वन समथिंग विद एमरी एज वेल. Hope this year Man City win UEFA Champions League and Arsenal play UCL. Yeah, sure. I honestly don't care about the Champions League because Arsenal are not in it. But I want to win the Premier League so bad. I want to win the Premier League so bad. You should join someone's watch alongs this World Cup. Good way to expose. The thing is, my friend. So the game here, the game in India is at 7:30 p.m. जब यहाँ के नहीं कितने 8:30 p.m. जब यहाँ के 3 p.m. होते हैं, तब मैं आई एम एट वर्क. आई गेट डन एट वर्क जब यहाँ पे 7 बजते हैं. फिर मेरे को खाना वाना बनाना होता है बिकॉज यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं है. आई हैव टू कुक, क्लीन, लुक आफ्टर माई सेल्फ, स्टडी माई सेल्फ, गो टू वर्क माई सेल्फ. घर के सामान लाना होता है. ये सारी चीज़ों में ना घंटे घंटे निकल जाते हैं. और जब तक मैं आता हूँ किसी के वॉच अलॉन्ग पे, जैसे आई ट्राई टू गो टू मोहक भाई वॉच अलॉन्ग एंड एक्सपोज माई सेल्फ नहीं, मतलब अपने आप को ज़्यादा एक्सपोजर देता हूँ. बट या मैन, आई सी maybe I'm gonna try and go to Baba ka watch along next time, or Nidhi Bhai's, or Manas Bhai, whatever. Matlab, whoever is doing a watch along, I'll see if I can come and join there. But it's a good idea, but time is again a huge issue, Varun. Yes, John Stones भी ठीक ही player है. Sesko 48, 16 goals, 1 assist. I don't want him. Cody Gakpo and Joao Felix's dream. Cody Gakpo would be good for you guys. Ten Hag knows how to work him. Once Newcastle enters, then look out. They're spending right now. They're stabilizing. Yes, that is true, Akarshan. I think it'll be like Man City. Once they enter the Champions League, they will not leave. Mangala, very good, Varun, man. कितने थे मंगाला के लिए? 35 million, 40 million? भाई, they've had some shocking signings. I am telling you. जितना क्रेडिट मिलता है सिटी को, it's not all that good. Recently, yes. Historically, not really. Isaac is too smart signing. Yes, I think Isaac will be a really good signing. जब वो इंजरी फ्री हो जाएगा, कभी लाइव मिले हो नहीं. But maybe one day when I come back to India. Hello Po. Hello Po. Arsenal versus Man City will decide the champion. बस एक दो या अच्छी साइनिंग हो जाए. I think जितना लेट हम मैन सिटी को खेलेंगे उतना बेटर रहेगा. Simply because then you can treat it as like a Champions League game, where you only have to win 2 legs to win the fucking trophy. अगर हम उनको थोड़ा अर्ली खेलेंगे तो मोमेंटम ब्रेक होने के बहुत चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. एंड ऑनेस्टली द लेटर इन द सीजन इट इज़ द बेटर बिकॉज प्लेयर्स विल प्रॉब्ली गेट बैक इनटू दैट क्लब फुटबॉल वाला ग्रूव. जल्दी खेलेंगे कुछ इंजरी हो जाएगी यार. आई थिंक इफ एडू केम बिफोर एमरी वुड हैव गॉन फॉर एमरी. Mikel was in our watch list then too, but we opted for Emery. I think Wenger to Arteta would have been disaster. I think Arteta नहीं survive कर पाता. जो अभी हमने लॉस देखे हैं Arteta के साथ. लास्ट टू लास्ट सीजन जब हम 8th आए थे, 8th 2 consecutive 8th finishes थी हमारी. वो नहीं survive करता Arteta. I think. I don't think so. Chelsea, Liverpool, City, and Madrid are all in the race of Bellingham. It would be mental if Bellingham chose to join Chelsea ahead of all of this. I don't know. Why would you sign for Chelsea? I'll tell you. 1, London. 2, a very reputed history of winning Champions Leagues. 3, a young, exciting English manager. 4, other English players. And you want to be the one who returns a team which might be struggling. अभी चलो जैसे सब कहेंगे Chelsea struggle कर रही है थोड़ी सी. You want to be the player that they signed to bring it all back. So I think आप Chelsea जाने के काफ़ी अच्छे arguments हैं. But in terms of अगर आपको purely footballing club देखना है, you have to choose Madrid or City. Have to. Madrid very well run. आपके ऊपर pressure बहुत होता है. But आप immortalize हो जाते हो if you go to Madrid. City, they run their club very well. And अगर आपको निकलना होता है, they don't stand in your way now. उनके पास पैसे इतने, they don't need to recoup their transfer costs. They don't ever stand in the way of their players leaving.
Hello Posayela. Bhai, I have no idea what you're saying, bhai. Dimichelis, Bakary Sane. Bakary Sane was okay. Dimichelis was a bad signing. You're again right, Varun. Marwan Shamak or Yaya Sanogo? Marwan Shamak. Because नहीं यार, I mean Sanogo ने कुछ करा नहीं एज एन आर्सेनल फैन. शमाक ने ज्यादा किया, बट आई लव सनोगो की पर्सनालिटी. ब्रो, तुमको लगता है कि आर्सेनल कोच को पेप के साथ असिस्टेंट कोच था, उसका फायदा हुआ है जो हमें आर्सेनल की अच्छी परफॉर्मेंस में दिखता है? सिर्फ वो नहीं माय फ्रेंड. Arteta was assistant manager to Pep. He played, so he was a player under David Moyes. David Moyes is also a good coach, चाहे कुछ भी कहें लोग. Then he played under Arsene Wenger, one of the most legendary managers of all time. उससे उसने काफी सीखा. एंड अगर आप, if you've gone through old videos of Arteta as a player, you'd always see in training he was always talking to Wenger and learning from him. Then he went to Pep and learned from him. So उसकी जो football education है Arteta की, it is absolutely insane. So it's not only Pep, it's also Wenger, it's also Moyes, it's also his time as a player at PSG, at Rangers, which has helped him a lot. Which education system is good, India or Europe? I think both have their own benefits. I used to think Indian education system is the worst, but there are certain aspects of the European education system I don't really like. Rewind some Man United signings of the last decade. Horrible signings as well, yeah. I'm not saying ki only City has done. Arsenal has also made some bad signings, but I think City can make those bad signings and still appear as भाई हमने तो बहुत ही बढ़िया signings करी. I think United has spent more money than City in the last decades, and आप देख रहे हो they're so much behind City anyway. My biggest heartbreak with Arsenal was when Percy. हाँ भाई, मैं ये comment आगे नहीं पढ़ रहा, मैं बहुत sad हो जाऊंगा. It was very complex, you're right, Vishal, but it's just a very sad thing. Bellingham will choose Liverpool, yeah, because he's a Gerrard fan, or for sure, or in my opinion, Real Madrid. Hey, don't sell Man City short, yeah. Every player wants to work with Pep. And now that Pep is here for 2025, I won't be surprised if Bellingham's there for at least 2 years. Every player wants to work with Pep. Every player wants to win the Premier League. With City, you get the maximum choice of winning the Premier League. So, yeah. Before we let go of Fabregas, bhai, aap Vishal, you're just making me sadder and sadder, bhai. Shama got Arsenal into the UCL in 2012. In all fairness, he was Arsene Wenger's man. Yeah, man. Yeah, man. And the fact that Arsene Wenger got into Champions League for 16 years in a row with Johan Juru in the back, Schillaci in the back, a young Oxlade Chamberlain, Koscielny, Per, Clichy, are yaar. It's hilarious how good Arsene Wenger was as a manager. Yes. Bro, Gakpo and Felix is dream for all Man United fans, but we need Shesko because Gakpo and Felix are not pure goal scorers. That's why we need Shesko. भाई ये बात तो हो सकता है. Shesko is a good goal scorer. Arteta's La Masia graduate. Yes, of course. But I hope he doesn't go to Barca. I hope he doesn't go to Barca. Ronaldo has been substituted off for 2 consecutive games by Nave Santos at the World Cup. Did anyone see him throwing hands? No, it's all about respect. And it's also about the fact that I think all this experience has also uh, humbled also, I guess, Ronaldo a little. But nay, you are right. It is a little bit about respect. Um, and I think Ronaldo is happy at Portugal. Is definitely happy when I've seen him at United. So yeah, maybe a little bit. Jack Wilshere or Thomas Rizki or not Torreira. I would say Super Jack. And of course, Thomas Vermaelen here. I love Holding, but Thomas Vermaelen was miles ahead of Holding. Now or never, nahi bhai, all or nothing on Prime, and that was really inspiring. Yeah, man, that is a great documentary. If you want an insight into Arteta, I think जो Arteta के doubters थे, once they watch All or Nothing on Prime, you realize what he's trying to do. भाई बायर्न नहीं जाएगी रोनाल्डो के लिए तो क्या ऑप्शन है रोनाल्डो के लिए भाई आई थिंक he's gonna go to Sporting. He's gonna do his best to win the World Cup. I think he's either going to go to Sporting or the MLS, and then he's gonna retire soon. I think that's it. I know he prefers Europe, and Sporting is his only option. Arsene should go for. Bhai, we have been trying for 4 years. He just doesn't want to move. That's the honest truth.
If it goes to bidding war, only Newcastle can outlast City. Also, FSG are selling Liverpool. Why would they invest 100 million? Oh yeah, FSG ka to they won't invest, but United can still buy because United ke owners have never given them any money. It's all club money. So yeah, I don't think FSG. I don't think Liverpool will make any signings. They can. लिवरपूल के तो यार वो जूलियन वार्ड भी निकल गया है. So something is happening. Nobody knows what's happening in Liverpool, but something is happening for sure. Rositsky, आज आओगे मोह के वॉच अलोंग पे? भाई अगर वो इफ he'll have me then I'll go for sure for sure. Sesko will move to Leipzig. हाँ भाई ये Red Bull ना एक पूरी ladder है. And by the way, it's not only Red Bull. City is also doing this, and now Chelsea is also doing this. आर्सेनल का भी सिस्टम है. आर्सेनल का बोरहम वर्ड सिस्टम, दे ट्राइंग टू गेट वॉटफोर्ड इनटू इट एंड देन आर्सेनल. बट चेल्सी के हैं, चेल्सी का भी सिस्टम है. सिटी का तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है. इट्स बिगर देन, नॉट बिगर देन, बट इट्स गोइंग टू बी एज बिग एज रेड बुल्स. रेड बुल के पास तो बहुत पैसा है. एक सेकेंड गाइस. Right. Biggest question for you: does Ronaldo touch the? Yes, Ronaldo touches the balls, man. Ronaldo touches the balls. Do you feel Xhaka is a long-term player in Arteta's system? Yes. I feel his role can be better played by player Locatelli. His half spaces. I think Xhaka has a good 2-3 years in him. I think 3 साल तो खेलेगा Xhaka because he is very crucial to Arteta's build-up. जब Xhaka नहीं होता है, the day Xhaka doesn't play, आप देखना हमारा build-up कितना screwed है. And I think Xhaka is very crucial. How we replace him? I have no idea. I genuinely have no idea. Maybe Sambi. Who knows? Maybe Sambi is not a Partey player. He's a Shaka player. देखना पड़ेगा. I think CR7 would either retire, go to MLS, even though I don't want him to leave Europe. Harsh Truth, this club would give second thoughts in signing him, maybe. You're right, Aditya. But a thing which complicates his move to the US is he's wanted in the US because of his sexual assault case. So if he lands in the US, you never really know. Maybe he'll get arrested also. CR7 will move to the Middle East. Nahin yaar. I think he's too proud to do that. He'd rather retire. Tielemans next year. I don't like Tielemans. I mean, he's a good player, yeah, but I get this feeling that when we get Tielemans, it's all going to go downhill. I don't think kuch hoga specifically. Iran versus USA. What's your prediction? I want Iran to win. I don't like USA. I don't like their football team. I don't like their fans. I don't know why. I just look at them and मेरे अंदर गुस्सा आने लगता है. Jasim, I want Iran to win. I really, really want Iran to win because they play so well. They play with their hearts out. But I won't be surprised if USA wins. Oh, सारे comments. Oh नहीं, दो दो और comments आ गए. Okay, Sambi is more like Partey than Xhaka. I feel company has managed him in Anderlecht and he has compared him to Fernandinho, so more of holding six. But there is something, I don't know, man. Maybe Arteta needs to talk to company and understand what Sambi needs to do. But Joby. Matt Turner, yes. Matt Turner is the only good thing about USA. He's the only great thing about USA. एक second, guys. Okay. Yes, I'll be there. Okay, that case is clear. Now he's not guilty anymore. I don't know, man. If it's clear, if I think it's been dropped, but there are still some charge. I don't know. I think from what I've read online, and I, of course, reading online does not mean it's true. But yeah, I don't think he'd want to go to the US either. Wanted, but in not in the way he'd want. Rice or Bellingham better signing for Arsenal? Either would do. I would love Bellingham, but I think he'll go to another club. I think it'll be Rice though. I would love Rice as well. Not only eating, but also the player. Who will finish higher, Man United in or Chelsea in the Premier League this season? Yeah, I think United. Unless Chelsea spends another 200 million, then I think United. Will CR7 go to Madrid? भाई मैंने कल एक न्यूज़ पढ़ी that Madrid thinks that जो फ्रांस के assessment of Benzema's injury है, that is exaggerated and he's not actually that injured. So if Benzema is fit for Madrid, then why would I don't think Ronaldo will go. Pulisic to Man United would be a hot for loan. What do you think? It fits. It fits
Like your right shoe would fit on your left foot. बिल्कुल भी नहीं. I think they should go for Gakpo. Much more attuned to that style. I think Pulisic needs a refresh. Now I don't know if it's in England or if it's in Spain or if it's in Germany again. कुछ भी है, but जो भी. I don't think so. It's good engaging with you, bhai. We'll keep supporting you. Thank you so much, Aditya. It was nice having you around, man. Thank you so much, Speed, bhai. Uruguay is too disappointed in this World Cup. Players are getting old, just like Belgium. I think Uruguay's main problem is they're just too negative, yeah. They're too scared of losing, and then they don't attack. And when they have to attack, they attack so well. Then they think हमने ऐसा पहले से ही क्यों नहीं किया. So I don't know what it was. कल की गेम में उन्होंने 10 मिनट इतनी बढ़िया प्रेसिंग करी और उसके बाद वो बस रुक गए. And I don't know if it's just a tactic, but if you can't press, then don't press. Why are you doing those 5 minutes of pressing and then inviting pressure onto yourself? या तो आप बिल्कुल ही ब्रेक के लिए खेलो, फिर आप प्रेस क्यों कर रहे हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया वो. On Gakpo in January, yes man. Gakpo to United will be huge. How about Arsenal sign somebody like Jonathan David? A direct poacher of a striker, gives variety compared to Jesus. Likes to drop in. I think we have too many strikers at Arsenal right now. I'll tell you. Jesus, Nketiah, Balogun on loan, Edwards, Tyrese John Jules. We have 1, 2, 3, 4, 5. अब यूथ में मीका बीरेथ भी है. और भी हैं यार. I think we have 6, 7 strikers if you include everybody from our youth. So we need to sell some players for sure. And then we can think about getting somebody like Jonathan David, Sesko, or Jao Felix, जो भी है मतलब forward. And yeah, let's not forget Martinelli can play forward also. तो यार है हमारे पास बहुत प्लेयर्स अभी स्ट्राइकर पे. स्ट्राइकर खरीदने के लिए हमें थोड़ा सा प्लेयर सेल करने पड़ेंगे. Ask any Real Madrid fans, Perez will never. Perez will never sign CR7. He did say himself he's too old now and he can't do the weight structure. Patino, he can at max play as a false 9, but he usually plays 8 or 10. Vishal. So Patino is not a forward. He's a great midfielder though. So yeah. Patino though, some people say he is the best academy graduate they've ever seen. And that is including Reece Nelson, Saka, and Jack Wilshere, who was considered the best. Choose one to sell, Eddie or Balogun. Think we'll bring a starter forward this summer. Let's see, man. I think we'll stick with Jesus. I think our wingers are getting. देखो आकर्षण, हमारे इस सीजन ना गोल्स काफी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. सो स्ट्राइकर का इतनी जरूरत नहीं है. मार्किनियोस विंगर है. विशाल. Who will we sell? I think we'll sell Balogun. एक लोन मिल गया है उसको. And I don't think Balogun will sign a new contract anyway. And Nketiah को हमने number 14 दिया. I think we'll persist with him a little longer. But I think, yeah, धीरे धीरे ना. See, we keep saying trust the process, trust the process, trust the process. But we need to sell players also constantly. हमारे youth players को वगैरह वगैरह. And we can't keep everyone, man. We can't keep everyone. World Cup finalist, Brazil has to be one of them. I don't know who's going to be the other finalist. But Brazil has to be one of them. Do you think Felix to Man United would be a great deal for both parties? Yes. I'll be very jealous if United get Felix. He's a great player. He's amazing, man. अरे यार मैं उसको देख भी सकता हूँ यूनाइटेड की जर्सी में. I want him at Arsenal so bad. I want him at Arsenal so bad. What about Emil Smith Rowe? He is injured. He will come back in January and I think he'll play the Xhaka position. क्योंकि Xhaka अब runs बनाने लग गया box में, right? He's now playing as a box to box. I think Emil Smith Rowe is great at that. उसकी dribbling better है Xhaka से, उसकी pace better है Xhaka से, उसकी shooting right foot की is not as good as Xhaka का left foot, but I think he's great at making those runs. He can carry the ball forward जो Xhaka नहीं कर सकता. So it's great that Emil Smith Rowe is coming back. Jishan, hey, hi Jishan, how are you, my friend? If Patino doesn't sign, as this is his last, he'll sign. I think he'll sign. अभी वो लोन पे गया है. एक सीजन और है इसके बाद. And I'm pretty sure जब हमने उससे प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, there must have been an option to extend. Patino जैसे प्लेयर को हम ऐसे नहीं जाने देंगे. Balogun signed extension before going loan. Eddie has got enough chances. I don't think we focus on Balogun and let Eddie go.
I think we wouldn't have given him the number 14 shirt. अभी एडी ने भी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया, तभी तो उसको नंबर 14 शर्ट मिली, आई थिंक ऐसे ही कुछ है. बट आई वुड पर्सनली परसिस्ट विद एडी. आई वुड परसिस्ट विद एडी. आई नो चांसेस बहुत मिले हैं, उसने अच्छा नहीं किया है, बट समटाइम्स प्लेयर्स जस्ट टेक अ लिटिल वाइल टू मैच्योर. मैन, यू लुक एट जो विलक, ही सो crucial to Arsenal. So I think sorry, crucial to Newcastle, Joe Willock. It takes time for players to mature, and I still somewhere I feel Eddie, man, he's Haaland, he's complete Haaland. Balogun bhi hai, but Eddie has to be there, man. Pep or Jose Pep. Like this, thanks TC. Hey, TCS be in the chat, man. Thank you so much, Bryce. 69 likes, everything is balanced. I'll have to check. But yeah. What happens if Felix scores hat-trick against Arsenal? I will stop watching football. No, I'm kidding. I'll be disappointed, यार. Van Persie ने गोल मारा है Arsenal के against. ये तो कुछ भी नहीं है. Do you think Ronaldo will accept? No, he will not. Palhinha will be great option. He will not be there. Wolves में ही खेलेगा वो. Jorge Mendes will move him where he wants to move him. He is not coming to Arsenal, and Arsenal will not deal with Jorge Mendes unless it's absolutely desperate. Okay, सारे comments done. Oof. Guys, again, if you've not followed me on Insta or Twitter, please kar lo. You can interact with me more. I am much more active on Twitter and Instagram. I respond to DMs and everything. Let's see couple more comments. Will Beckham's Miami PSG में करेंगे. He looks like कि Inter Miami के लिए हो जाएगा. Eddie needs more time. Yeah, he's got 14 because of extension, right? Palhinha is in Fulham. Oh, sorry, not Wolves. है. Wolves में कौन है? Nunes है ना? हाँ, Palhinha is in Fulham. Then maybe yeah, we can get Palhinha, but he's just moved now. That's the thing. So I don't think players इतनी जल्दी move करना चाहेंगे. But yes, my thoughts on Messi to Inter Miami. I think he'll stay at PSG. I mean, although rumors are hotting up, तो जा भी सकता है, but I don't know why he'll move to the MLS. I think it's his dream to go back to Barcelona. Yeah, I think he'll evaluate the situation. If he's happy at Paris, then yes, he'll stay in Paris. If he wants to go to Barca, he'll go to Barca. If he wins the World Cup, I think he's retiring. He's retiring for sure. A good backup competitor to Partey. I agree, man. Palhinha actually sounds like a good signing to get for Partey. That's a great shout, yeah. जिसने भी Palhinha बोला, किसने बोला? Hussein. Yes. Palhinha and Akarshan. Yeah, you're right. Do you know YJR? Only by name. I have never spoken to him. Hopefully, one day I will get in touch with him and he and I can collaborate on something. I really like his style of videos. It's what I eventually aspire to be. Can Arsenal get UV players in the term? Nahi bhai. I personally have a very huge dislike for Juventus because Locatelli उन्होंने ले लिया, उन्होंने Vlahovic हमसे ले लिया. I mean, Vlahovic and Arsenal were very close. Locatelli and Arsenal were very close. बट यूवेंटस का जैसे ही कॉल आता है वो यूवेंटस चले जाते हैं. एवरी प्लेयर who's played for an Italian team wants to play for Juventus, and Juventus has been playing like shit, and I'm so happy उनके साथ ये सब हो रहा है. नहीं, एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए ऐसा. Pavel Nedved is a good player, man. But नहीं, man, I don't like Juventus. I would never deal with Juventus. Bayern to Harry Kane. I don't know about if Bayern can go to Harry Kane. Harry Kane can go to Bayern, but depends on how big the record means to Harry Kane. If trophies mean a lot more to Harry Kane, then yes. But if it's the record that Harry Kane is after being the highest scorer in the Premier League, then he's not gonna go. Do more such live stream, brother. We are always here to support. Thank you so much, Jasim. Whenever I find time, I will do an hour long or 2 hour long live stream. Liverpool going for Kudus. Is that confirmed? Yeah, because Kudus is a good player. I thought Kudus would go to Man United or something. But ठीक है. My Twitter handle, भाई, my Twitter and my Insta handle both are Global Waffles. देख लो भाई. Congrats on thousands. Thank you so much, my friend Aben. Messi shouldn't go back to Barca, to be honest. He shouldn't, but it's all sentimentality, man. Football, a lot of times football is not a logical sport. हम लोग फैंस इसलिए हैं, हम लोग एक्साइट इसलिए होते हैं बिकॉज इट्स अ रोमांटिक स्पोर्ट यार. यू फॉल इन लव विद द गेम एंड थोड़ा रोमांटिसिज्म तो आना चाहिए. दैट इज व्हाई आई थिंक he might want to go to Barcelona. I don't know.
Depends on how things are. Daksh, when are you collaborating with TCSB? Whenever TCSB tells me, bhai, aa jao, you can talk to Mohak, you can take my number, you can reach out to me on Twitter or Instagram, DM कर दो and I will reach out to you. भाई तुम्हें जब बुलाना है बुला लो. I am always available to you guys. We can sort out a time and we will fix it and I'll come on your channel and you can come on mine and we can do something really really cool. I can't wait. Honestly, can't wait. TCSB के साथ I really and I'm not even saying it as a joke यार. आप लोगों की बात सुन के मेरे को इतना अच्छा लगा था when I saw you on Mohak Bhai's channel. I really can't wait to collaborate with you guys if you want to collaborate. Vlahovic, Vlahovic. Best football channel you like in our community? Plenty, yaar. I like Yash ke channel. I like Baba Mohak Bhai, of course. I love Nidhi Bhai and Manas Bhai. I think theirs is the most unique. बहुत chill, बहुत mature, बहुत calm. Nothing controversial. निधि भाई के analogies भाई मजे आ जाते सुन के. Favorite footballer? Dennis Bergkamp. Martin Odegaard or Fed? Martin Odegaard because he's an Arsenal player. But I love Fed Valverde. Although कल उसने कुछ perform नहीं किया. But I love Martin Odegaard, man. I love Martin Odegaard. Yes, Nedved has signed from the Juve board. Agnelli ने भी Juve board से sign कर लिए. सभी निकल गए हैं. Arrive Bene, he will also resign as CEO once we get a new board. We नहीं, Juve get a new board. Musiala or Gavi? Musiala. I think he's going to make it big time. Big time. Underrated player of Arsenal or overrated of Arsenal? Underrated player of Arsenal? I would say इस season से पहले तक was Ben White. Ben White was very underrated. अब उसको properly rate करने लग गए हैं. Overrated player in Arsenal? कोई नहीं यार. अभी तो कोई overrated नहीं है. I think everyone is properly rated at Arsenal right now. More underrated than overrated. Currently, there are no overrated players. I searched it just now. It shows no result. What? आप एक बार फिर से देखिए. लास्ट टाइम तक एक दो बार से पहले तक किसी ने आपने स्पेलिंग एक बार दोबारा चेक कर लो भाई. विशाल भाई, आई एम डेफिनेटली ऑन दिस चैनल, ऑन दिस हैंडल ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम. मैं एक बार अपना इंस्टाग्राम चेक कर लेता जस्ट टू मेक श्योर इट्स मी ओनली. नहीं भाई, ग्लोबल वॉफल्स ही है यार. ओके, मुलर पे दो शब्द. मुलर पे दो शब्द. एब्सोल्यूट लेजेंड यार. वो बंदा आया था 2006 वर्ल्ड कप में और तब से कंसिस्टेंट रहा है. अब आई थिंक ही इज स्टार्टिंग टू फॉल ऑफ लिटिल बिट, बट ही इज बीन माय फेवरेट जर्मन प्लेयर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. एब्सोल्यूट लेजेंड. टुनाइट फॉर अ वॉच अलोंग वी कैन डू इट. आज कौन से वाले गेम का वॉच अलोंग कर रहे हो? अगर इफ यू आर डूइंग द लास्ट गेम ऑफ द डे आई कैन कम, बिकॉज उससे पहले आई हैव सम वर्क. बट जस्ट shoot me a DM or something. I can I'll come to your stream and I'll ask for the link and tab then I'll join you guys for sure. Underrated Ben White, overrated no one. Exactly. Do you think Martin Odegaard deserves Arsenal captaincy? 100%. I think he's been given leadership roles all his life, and I'm not only talking about the Norwegian team. Even in his boyhood club, he was given captain's responsibility. फिर वो नॉर्वे का कैप्टन बना. उसके पास ही इज बिन थ्रू इमेंस प्रेशर यार. रियल मैड्रिड ने उसको 16 पे साइन किया था. देन इट डिड नॉट टर्न आउट वेल, बट ही हैज हैड दैट मीडिया स्क्रूटनी एंड ही इज अ वेरी मैच्योर प्लेयर. वो फ्लैशी नहीं है यार. ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. ओके, आई थिंक ही इज अ प्रोफेशनल एंड दैट इज व्हाट यू वांट फ्रॉम अ कैप्टन समटाइम्स. गैब्रियल इज अंडररेटेड बाय फैंस. हाँ भाई. बिग गैबी, जिसको मैं कहता हूँ द डिफेंडर, द सीबी, आई थिंक इज वेरी अंडररेटेड मैन. आई थिंक उसकी गलतियां स्टैंड आउट मोर देन हिज गुड डिफेंसिव एफर्ट्स. एंड जब वो फर्स्ट टाइम हमने साइन किया था, एवरीवन वो सब उसके गुण गा रहे थे भाई. गैबी. अब जब से सलीबा है, एवरीवन वांट्स दैट न्यू टॉय. सबकी आंखें उस न्यू टॉय पे हैं. बट बिग गैबी फॉर मी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्सेनल डिफेंडर्स वीव एवर साइंड. भाई, if you're going from fucking Mustafi to Big Gabby, and God knows Mustafi holding की backline pairing और Socrates Mustafi की backline pairing से Saliba and Gabby, how can you say Gabby is terrible? Shut up. Congratulations. Thank you so much, Aryan bhai. You're also one of the OGs.
As a Man United fan, I love Martin Odegaard because of dribbling. Yeah, he is nothing flashy. He just knows how to pick the right pass at the right moment. He would be amazing in a Pep-like system. मेरे को तो डर लग रहा है one day Pep will come for him. When will Arsenal win the Champions League? I think we will not win the Champions League in a while. I think we might win the Premier League, but Champions League is a different story altogether for us. Rafael Leao now versus Kylian Mbappe 28. Kylian Mbappe 2018,000%, man. What are you saying? What are you saying? No, 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 no. Kylian Mbappe. Monaco Kylian Mbappe was something else. Okay. ठीक है भाई. We'll do it. Yeah. Just I'll come onto your Steam and I'll go. चलो चलो. We'll collab today. Can you tell me your all-time 11? Oh, that's a huge question, man. Okay, I'm going sentimental, okay? And I don't know आप लोगों ने कितने इनमें से प्लेयर्स देखे हैं इन देयर प्राइम. गोलकीपर हैज टू बी कसियास. एक 18 साल के कसियास ने रियल मैड्रिड के गोलकीपर एलिग्नियर को डिस्प्लेस कर दिया था. ह्यूज. ग्रेटेस्ट राइट बैक डैनी एल्वेज इन हिज प्राइम. सेंटर बैक ऑल टाइम. अरे यार ऑल टाइम तो इतनी ज्यादा बड़ी लिस्ट है. नहीं 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 नहीं. गिव मी नरेन भाई. यू गिव मी अ ईयर और यू गिव मी अ लीग और यू गिव मी समथिंग. क्योंकि मैं फिर लोथार मैथोयस और नेस्टा माल्डीनी इन सब पे चले जाऊंगा. नहीं नहीं नहीं. दैट्स टू मच यार. आई कांट डू दैट. या गॉट इट. मिल गया. थैंक्स. ग्रेट विशाल भाई. Which African player most impressed you in this World Cup? Kudus. I love Kudus. मॉड्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप इफ यूर अ रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस चैनल, इफ यूर ऑलवेज प्रेजेंट इन स्ट्रीम्स, इफ यू इंटरैक्ट विद मी एंड आई नो यूर अ डिपेंडेबल पर्सन एंड यूर नॉट एन एसहोल, then you can be a mod. Ramsdale can. I don't agree, man. No. Jishan, I don't agree. I think sometimes he does stupid things and sometimes he's a little overboard, but I don't think he's overrated. No. What will happen in December? Christmas, my friend. नहीं, I'm kidding. December में वर्ल्ड कप खत्म होगा, उसके बाद कुछ मैचेस होंगे. December will be, I don't know, man. थोड़ा डिफिकल्ट तो होने वाला December, but नहीं, we'll manage. We can prepare for the transfer window. I can't wait for club football to come back, man. What do you think? Ronaldo? No. Bruno's goal. 100% Bruno's goal. Ronaldo की 3-4 बाल छू के गई है. नहीं. मंजू भाई, I will have to put you in timeout next time if you spam भाई. Cruz or Kevin? De Bruyne or Cruz? I'd say यार तुम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है. I'd say Kevin De Bruyne. What will happen in this? After a very unexpected moment in FIFA, all be like football आराम कर. Don't spam भाई मंजू भाई. Saliba and Gabriel are best CB since Sol Campbell. नहीं, I'll tell you who our best CB pairing. Our best CB pairing was, अगर आप Sol Campbell टाइम जाओगे तो हाँ, but I think most recently it has to be Per Mertesacker and Koscielny. Mertesacker की reading of the game, Koscielny की aggressiveness, unparalleled. Hopefully these guys also manage to come to that level. Would you take Nabi? नहीं, बस मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, हो गया. दाविड De Gea और एलिसन? I think De Gea in his prime. Modric or Iniesta? अरे भाई Iniesta. Buffon. Modric or Iniesta हो गया. Players after 2005. All time 11 players after 2005. Okay. Goalkeeper Casillas. Right back Dani Alves. Centre back Vidic and Puyol. Vidic and Ramos. Left back peak Patrice Evra. हाँ. Centre mid पैट्रिक वियरा और कीन. मैं 4-4-2 जा रहा हूँ. राइट मिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो. लेफ्ट मिड लियो मेसी. स्ट्राइकर थियरी ऑनरी एंड रूनी. दैट इज माय स्टार्टिंग 11. मॉड बना दे मेरे को भाई. अभी नहीं भाई, अभी नहीं.
Vasu, Iran will win. Vasu's in the chat, bhai. Vasu is one of my favorite people in the whole world, yaar. Who would be against Portugal in the round of 16? Um, देखना पड़ेगा यार. I think Portugal are topping the group. तो कोई second ही आएगा वही होगा उनमें से. Oh, Danny Ceballos would have been good at. No, 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 no. I think he was decent, but I don't think he is exactly the player we need. Otherwise, we would have gotten him back on loan. या permanently खरीद लेते. Real Madrid is currently overrated. Real Madrid is currently overrated. Currently. नहीं. I don't agree with that, Amal bhai. I don't agree with that. I think they're underperforming, but I don't think they're overrated. Hey bro, next up हमारा friendly games December में है. What do you think about that? Oh, Juve, Lyon and Milan. Good friendly games. Although I am a little skeptical about who will play. Okay, let's see who's not gone to the World Cup. Gabriel Jesus will not play. He's going on holiday for sure. Nketiah will play. Martinelli will not play. Reese will play. Marquinhos might play. Odegaard will play. Xhaka might play if he's back. Partey might play. Fabio Vieira will play. Holding will play. Saliba might play. No, सलीबा का नहीं पता मुझे. नहीं नहीं आई थिंक फर्स्ट टीम तो नहीं खेलेगी फॉर श्योर इन गेम्स में बट गुड फ्रेंडलीज. आई होप इनमें से कुछ कैंसिल ना हो जाए. लाइव वॉच अलॉन्ग टुडे. आई एम डूइंग अ लाइव वॉच अलॉन्ग अपेरेंटली विद TCSB. So if you are not subscribed to the TCSB, subscribe to TCSB. मैं उधर जा रहा हूँ. I'm gonna put a community post also when I'm live with them. तो प्लीज आ जाना TCSB के स्ट्रीम पे. Your favorite Messi or Ronaldo? I think my favorite, I've said very recently, it used to be Messi, but now it's Ronaldo. Right back Cafu, yes man, but 2005 के बाद Cafu wasn't that Cafu. I think peak Cafu was 2002, 2003, 2004. But Dani Alves for me is a great man. Someone said Real Madrid is over. How's that? Yeah, I don't agree with that, Aditya bhai. Your favorite Messi हो गया. No Gerrard. Yeah, that's the thing, right? I've gone for a 4-4-2. अब मैं उसमें Vieira और Keane को हटा. बताओ मैं उन दोनों की जगह. There is Lampard also. There is Gerrard also. There are so many good players in that center mid. There's Scholes. हैं. और कौन है? There's Patti. There is. मैंने अपने आर्सेनल प्लेयर्स को इतना नहीं रखा है. पिरेज को नहीं रखा मैंने. बर्ग कैंप को नहीं रखा. मेरे ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर को मैंने नहीं रखा 4-4-2 में. सोचो भाई, सोचो. तो यार you can't keep that. Who has better win this season? Lisandro Martinez. I think Saliba. Although Lisandro's also been really good, but I prefer Saliba. I think no, Saliba's been better. I'd say Saliba's been better. उसने गोल भी मारा है. Per Mertesacker OG, yes. अरे bro, good evening भाई. प्रशांत कैसे हो भाई? Why you become Arsenal fan, not Man United? Because everyone was a Man United fan. नहीं, I'm kidding. I became an Arsenal fan because मेरे को वीडियो गेम में Arsenal ही खेलने को मिली थी. So I played with Arsenal. Then I saw them on TV luckily. And I became an Arsenal fan. Can't get over the Messi moment, man. Oh, the goal now against जो भी उन्होंने वर्ल्ड कप में गोल मारा उसकी बात कर रहे हो या कौन से मोमेंट्स ऑफ मेसी तो इतने सारे हैं. There was that moment जब उसने बोआटेंग को sat him on his ass. There was a moment when वो कॉर्नर में था एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट 3 प्लेयर को काट के निकल गया था. Oh, too many messy moments, man. Too many messy moments. Fill in the blank. Muchas gracias, Afisa. Esta por vosotros. UCL winner को overrated बोल रहा है यार. हाँ. For you, was the player that who had the potential to be superstar for Arsenal? Samir Nasri is a good shout. You know who Renisu? Abu Diaby. Abu Diaby could have been the next Vieira, but he got injured so much. मोहक भाई और मुक्तेश मार्करोनी. क्या था अनिल भाई? वेट व्हाट डिड आई मिस? आपने कुछ बोले इनके बारे में? अमाल भाई पता नहीं यार. आई डोंट. इफ दे हैव सेड इट अगेन आई कैन डिसएग्री विद देम बट आई डोंट नो. 87 likes guys, make it 100. Yes, let's hit 100 like hacker man. वासु भाई, वासु in the chat. I'm so happy भाई वासु तू इधर है. Think Amal Sharma has forgotten Real Madrid last season. हाँ भाई, Real Madrid, fucking Real Madrid of all teams, man.
I don't think any player involved in this World Cup will feature in the friendlies. Could be, but then depends on who we play. If some players come back early, they want to get into the groove of the Premier League. Yeah, so I don't know. Araujo could make the difference if he was fit last night. Valverde is the best right winger. I mean, ठीक है आपके अगर वो है तो that's good. Yeah, I think Valverde is getting there. He is not the best currently, but for Uruguay, yes, I agree that Araujo could have made a huge difference. भाई आप तो आयरलैंड में रोज पेल गर्ल्स देखते हो. नहीं, यहाँ पे पेल गर्ल्स हैं, टैंड गर्ल्स हैं, ब्राजीलियन गर्ल्स हैं, ब्लैक वुमेन हैं, इंडियन वुमेन हैं, पाकिस्तानी वुमेन हैं, अफ्रीकन वुमेन हैं. There's all kinds of people here. So it's not only pale girls that I look at. Favorite Real Madrid or Barcelona? Real Madrid. बार्सिलोना के साथ मेरी खुद की ना थोड़ी सी दिल में लगती है. यस ब्रो, मेक्सिको वाला बहुत बहुत ब्यूटीफुल गोल था. हजार्ड केडीबी वाला फाइट न्यूज सच है क्या? आई हैव नो आइडिया मैन. ट्विटर पे इतना भरोसा मत करो यार, लोग ना क्लिक्स के लिए कुछ भी लिख देते हैं. मैंने कल एक ट्वीट पढ़ा था दैट व्लाहोविच व्लाहोविच वाज ट्राइंग ऑन सम टीम, उसके टीममेट की बीवी के साथ. नाउ इट्स नॉट दैट दिस इज नॉट हैपेंड इन फुटबॉल, बट ये कोई अननोन अकाउंट था जिसने ये लिखा था और उनकी व्लाहोविच की लड़ाई हो गई बिकॉज अपने उसने टीममेट के उसकी बंदी पे लाइन मारा था. तो आई डोंट नो मैन. डोंट बिलीव ट्विटर, डोंट बिलीव ट्विटर. नेक्स्ट ईयर लंदन जा रहा हूँ स्टडी के लिए. अरे बढ़िया भाई आरफत भाई. फिर मैं भी आर्सेनल टॉटनहम फैन. ओ, टॉटनहम फैन नहीं बनने का आरफत भाई. इफ यू वांट सैडनेस एंड डिप्रेशन इन लाइफ तो आप और कुछ कर लो. लड़की से दिल टुटवा लो, अपने पैसे लुटा दो, अपने कपड़े फाड़ दो, अपने एग्जाम में फेल हो जाओ. बट आपको उससे भी बड़ा डिप्रेशन चाहिए, दैट्स द ओनली टाइम यू शुड बी अ टॉटनहम फैन. मेसी 93rd मिनट एट सांतियागो, और उसके बाद वो शर्ट निकाल के, यस 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 आई रिमेम्बर. हेलो शाश्वत भाई, हाउ आर यू माय फ्रेंड? What do you think Ronnie's next club? I think it has to be Sporting. Or if that case is gone in the US, then somewhere in the US. आज भाई कौन से watch along आओगे? आज I think I'll be at TCSB's watch along most likely for most of the time. Maybe I might hop around for a couple of bits, but mostly TCSB भाई. उन्होंने मुझे पहले invite कर दिया. I will not deny that. Barcelona of 2019-11 or Real Madrid. I think that Barca team, I have never seen anything like it. Won't forget Van Persie red card. Arey yaar, Renisu, why you make me sad? Why you make me sad? Do you want Ghana to go forward in this World Cup because it means risking his injury? Yeah, I इसका मतलब आपने मेरी लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी आयरन. No. I am happy that non-European teams are going forward, but I am sort of concerned that Partey is also going forward. And I hope he doesn't get injured, but I think वो injure होगा. बट यार सबका ड्रीम होता है अपनी नेशनल टीम के खेलने के लिए, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो. आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट हिम. ग्रेजुएशन कहाँ से करा? व्हाट वाज योर मेजर? माय अंडर ग्रेजुएट वाज कंप्यूटर साइंस. आई डिड इट फ्रॉम अ कॉलेज इन फरीदाबाद. माय मास्टर्स वाज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. आई डिड इट फ्रॉम मणिपाल. एंड देन आई एम नाउ इन डब्लिन इन आयरलैंड. इकार्डी एंड वंडनार. अरे let's not go there guys. Let's not go there. Wainbridge and John Terry भी था. Let's not go there. According to you, who is the most underrated club in football history? Underrated club? I think Crystal Palace. Or before this ownership, Newcastle also. Both great clubs. भाई मेरा कतार जाने एंड मोमेंट पे कैंसिल हुआ. भाई अच्छी बात है, आपका पासपोर्ट ले लेते आर्यन भाई. Do you think Saliba will stay for more than one? I'm a bit skeptical about it. I am too, man. But one thing which has worked in Arsenal's favor, which I'm not happy about, of course, is कि उसने वर्ल्ड कप अभी तक खेला नहीं है. अगर वो वर्ल्ड कप खेलता and he was performing like he was performing at Arsenal, every other team would be on him. अभी सलीबा के thoughts पीछे चले गए हैं and other CBs are performing really well. So maybe who knows, सलीबा का स्टॉक उतना नहीं बढ़े जितना मुझे लग रहा था वर्ल्ड कप से पहले कि ही इज गोना प्ले द वर्ल्ड कप, देन उसका स्टॉक बढ़ेगा, देन ही विल बी रियल मैड्रिड या पीएसजी. नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक he might sign a 3-year extension if not less. Comments. I think bhai Lord's Latin is Lord's Latin because of how he played in
अगर आपने ज़्लाटन को पीक पे देखना है, आप उसके आयाक्स के गेम्स देखो, आप उसके व्हेन ही प्लेड फॉर आयाक्स, व्हेन ही प्लेड फॉर यूवे, व्हेन ही प्लेड फॉर इंटर, दोज़ 3 आई थिंक वर पीक ज़्लाटन। लियो तो बार्सा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। भाई, मुक्तेश सबसे ज़्यादा खुश होगा जिस दिन लियो मेसी इज़ बैक टू बार्सिलोना। हाउ डू यू फील व्हेन वैन पर्सी जॉइन यूनाइटेड? हार्ट ब्रेक। मैं रो गया था उस दिन, जेन्युइनली रो गया था, बिकॉज़ आई वाज़ एंग्री एंड सैड बिकॉज़ वी स्टक बाय हिम when he was injured and he was not playing well and he had no form. Everybody wanted to write off Van Persie, and we stuck by him and he deserted us. And I think at some point he was also right, but I felt betrayed. बहुत बहुत betrayal वाली feeling है मुझे. Thoughts on FA Cup draw? आई थिंक पहली बात तो आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देखिए जसिम भाई. आई टॉक्ड अबाउट इट वेरी ब्रीफली. आई थिंक आई एम हैप्पी दैट सिटी एंड चेल्सी ड्रू एक साथ, तो उनमें से एक एलिमिनेट हो जाएगा, विच इज़ अ बिग बिग थिंग. देन यूनाइटेड एवर्टन इज अ गुड ड्रॉ. आर्सेनल एंड ऑक्सफोर्ड आई थिंक इज गोना बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रॉ. हम अपने फर्स्ट टीम नहीं खिलाएंगे उसमें. It's a good thing because it means for another competition we can try out our youth players. And अगर हम जीतते तो अच्छी बात है. अगर हम नहीं जीतते, our first team is still fresh for the Premier League game. So it's a good draw for Arsenal. I'm happy. Favorite food: छोले भटूरे, बटर चिकन, पनीर माखनी, और यहाँ पे आके थोड़ा सा चाइनीज फूड भी. एवर्टन. डबलिन में कितने बजे हैं एग्जैक्टली? राइट नाउ इट्स 1:15 PM. मेरे को 45 मिनट्स में निकलना है गाइस. आई एम सपोर्टिंग यूनाइटेड बिकॉज ऑफ रोनाल्डो. आई एम सपोर्टिंग आर्सेनल. यस, another I show speed in the chat. Which country you will support in the World Cup? I'll support Brazil. Guys, please like the stream. If you've not subscribed, please subscribe. I don't know how many likes there are. मैंने अभी तक इसका स्ट्रीम का थंबनेल नहीं बनाया, मैं बना दूंगा, उसके ऊपर लगा दूंगा. But please like the stream. It will mean a lot to me. Visca Barça, Mexican club. Jesus or Richarlison for Brazil. I wanted Jesus to play, but I can't fault Richarlison. He's been fantastic. Yeah. He's been fantastic. AC Milan's Zlatan was also good, but I still think Inter Milan's Zlatan was better. And Juve's Zlatan was better. And Ajax Zlatan तो भाई अलग ही प्राणी था, अलग ही प्राणी. PL teams getting relegated this year, I think. एक बार टेबल देख के बताता हूँ मैं. आई थिंक बोर्नमथ तो नहीं बोल सकते क्योंकि ऊपर है काफी. ओके, टेबल्स नंबर 1 आर्सेनल. आई थिंक वुल्व्स विल गो डाउन. आई थिंक साउथहैम्पटन विल गो डाउन. आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट. ये तीन ही जाएंगी. आई डोंट थिंक एवर्टन विल गो डाउन. आई डोंट थिंक वेस्ट हैम विल गो डाउन. आई थिंक लीड्स विल ऑल्सो सर्वाइव. बोर्नमथ 14 है, मेरे को याद था 11th थी और समथिंग. खैर जो भी है, आई थिंक दोस थ्री, द थ्री विच आर इन द रेलिगेशन जोन राइट नाउ विल गो डाउन. Christmas tak, if you're in the relegation zone and you have so little points, I think you have to go down. Who will win UCL? I have a sneaky feeling that it's Man City. I have a very sneaky feeling it's Man City. Hum sab Barca fans would be mad if Leo comes back. Man, really? Nine. Really? I don't think so. I think आप इसमें minority पे होंगे, but I could be wrong. Lisandro or Virgil this season? अरे Lisandro for sure. Should Arsenal go for Ronaldo in winter? No. Arsenal is like RCB in the Premier League. पहले अच्छा स्टार्ट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस गिर जाता है और होप इस सीजन. नहीं भाई रोशन, वी आर नॉट आरसीबी. होपफुली वी आर सीएसके जो हमेशा जीत जाती है, मुंबई इंडियंस जो हमेशा जीत जाती है. एफए कप और यूएल, विच वी शुड फोकस ऑन द प्रीमियर लीग? यूईएल मोर विनेबल. एफए कप हमारा ऑलरेडी है. नहीं यार, आई आई थिंक हमें सब पे फोकस करना चाहिए, बट इफ यू आर आस्किंग मी, आई वुड फोकस ऑन द यूईएल. एंड अगर इवेंचुअली बात आती है प्रीमियर लीग और यूएल, देन प्रीमियर लीग. वुड यू प्रेफर विनिंग द प्रीमियर लीग? ओनली प्रीमियर लीग भाई, ओनली प्रीमियर लीग आई वुड प्रेफर विनिंग. अ टीम यू लव टू वॉच अदर देन आर्सेनल? देयर प्लेंटी ऑफ टीम्स. आई लव वॉचिंग लीड्स. आई लव वॉचिंग पैलेस इवन दो अच्छा परफॉर्म नहीं करी. आई लव वॉचिंग लिवरपूल. आई लव वॉचिंग सिटी. आई लव वॉचिंग नैपोली व्हेन आई गेट द टाइम टू वॉच. बट इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, और अब तो मैं आर्सेनल के अलावा और कुछ देख भी नहीं सकता. एलए गैलेक्सी ज़्लाटन.
यार वो ज़्लाटन था जब ही वाज़ ऑलरेडी गॉड फॉर हिमसेल्फ, उसने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, बट नहीं। अपार्ट फ्रॉम आर्सेनल्स कोचेस, हू डू यू थिंक इज़ द, आप काउच पूछ रहे हो, कोच पूछ रहे हो? बिकॉज़ काउच के बारे में मुझे नहीं पता, बट कोच में पेप लिंडर्स इज़ गुड। जो पेप का असिस्टेंट है, ही इज़ गुड। जो अभी यूडी इबित्सा का मैनेजर है, जुआन कार्लोस कर्सेडो, जो एमरी का असिस्टेंट था, ही वाज़ वेरी गुड। बट या, यू एन्जॉय रोनाल्डो गोल और मेसी गोल? व्हिच रोनाल्डो गोल? रोनाल्डो ने सिर्फ पेनल्टी मारी ना इसमें, वर्ल्ड कप में। मेसी का गोल ऑब्वियसली इस वर्ल्ड कप में बेटर है। 95 lakhs, 5 more for 100, let's go! Everton are too big to get relegated, to be fair. हाँ, नहीं, there is nothing as too big है। लीड्स relegate हो गई थी, क्या बोल रहे हो आप लोग? Anyway, FIFA 22 is great example of sports and intersection of fire and politics. हाँ भाई, the amount of coverage the media has done, the kind of coverage media has done against a West Asian country, and the idea कि Western values are universal and जो भी Western values के against है is a bad place. Everything from media narratives से लेके मैचेस का भी आप देख लो, अभी यूएसए और ईरान आर गोइंग टू प्ले। सो या, मैड मैड का मतलब खुशी से पागल हो जाऊंगा। ओ आई वांट हिम बैक। ओ अच्छा, मेरा जब कोई मैड बोलता है ना, मेरा था कि गुस्से वाला मैड। यू आर राइट, एज आरएम में थोड़ा पॉलिटिक्स चलता है, ईगो वाले लोग बैठते हैं, ऊपर से CR7 एंड पापा पेरेस। हाँ यार, PSG Zlatan was very good यार, how did I forget PSG fucking Zlatan? I think Brighton will challenge for Europe next season. नहीं, I think Conference League, maybe Europa League. De Zerbi needs time basically. Yes, coach. When should be who should be the heir to Partey? I think in 2 years we should have an heir to Partey. एक दो साल groom somebody, but it's time to start the process, man. It's time to start the freaking process. Okay, Wenger has won us FA Cups for this lifetime, so please focus on PL and CL. We shouldn't abandon the FA Cup, but it will be nice to have a new trophy for a change, even a Carabao Cup, to be honest. अब तो हम निकल गए उस कप से, but I would love for a new trophy to be added to the cabinet. A new Premier League trophy would be amazing. A new our first European trophy would be huge for Arsenal. Huge for Arsenal. Argentina or Portugal? In this World Cup, Argentina. I personally want Argentina and Messi to win, but I think Brazil will win. Apple in race or nahin yaar, I don't know why would Apple buy this. Nahin, no. Apple in race for Man United. Imagine buying United, not finding Bade Bhai is like not having chance in iPhones. I don't know. By the way, this rumor that Apple wants to buy United, I don't believe in it, because I don't see what Apple gets out of it. They are already a well-known company. Um, advertisement rights, I have no idea why. But stranger things have happened. Spotify has bought naming rights to Barcelona का stadium. और क्या ही करें. What was the biggest upset in the World Cup so far? Definitely Saudi Arabia versus Argentina, man. I think Argentina was expecting to win so easily. They did not expect Saudi to do what they did. So I think that's the biggest upset. And उसके बाद से I think उसके बाद Japan and Germany was the second biggest upset for me. Again, Germany took Japan a little too lightly. और उसके बाद bottle job था Japan and Costa Rica का. So yeah, those are my three teams. नहीं, Leo to Barca should happen and Barca should win La Liga in Europe. भाई, you have to get through Man United, and Man United, by the way, जिस हिसाब से उनके प्लेयर्स का वर्ल्ड कप चल रहा है, I think Man United is also a great team. Xhaka here is also needed in the summer. We have Emil Smith Rowe, we have Sambi, one of those two. We have Fabio Vieira also. इन तीनों में से कोई हो जाएगा. Wenger at Arsenal versus Jose. अरे Wenger, always Wenger. Yes, make it 100 guys. Come on, अब तो बहुत टाइम हो गया. अब तो 100 हो जाने चाहिए, प्लीज यार. Apple has already pulled out. हाँ भाई, वही. Okay, then are you a Messi fan? No, I'm a Ronaldo fan, but I want Messi to win the World Cup. I know it's a little weird, but I think the romanticism of Messi winning the World Cup and उसके जितने comparison होते थे मैराडोना से, आपने YouTube वीडियो देखी होगी, Messi doing the same things that Maradona did. I think the only thing missing from Messi
is a World Cup. And that's why I want him to win. Old Trafford, I Trafford. Plus too much image to preserve. Nine, nine. Not that, yeah, bhai. But I just don't see what they gain out of this. And why football running is a sinking investment unless you're the Glazers. Japan versus Germany was the biggest upset. Next World Cup in US, let's see if media and political activists नहीं देंगे. Highlight कर देंगे, but they will not do the same things that they did in Qatar. जैसे for example, कतार में ओपनिंग सेरेमनी बीबीसी ने नहीं दिखाई. बीबीसी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा यूएसए में. It's going to be a party plain and simple भाई. In the US, ये थोड़ा सा political हो जाएगा. Let's not go there. But it's not been fair on Qatar, I would say. नॉट टू मेंशन कतार ने कुछ गलत काम करे हैं, काफ़ी गलत काम करे हैं इनफैक्ट। बट ये सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़, डोमिनेंस एंड काफ़ी सारे मैंने जहाँ तक जितने टाइम में डबलिन में रहा हूँ, वेरी मोस्ट पीपल आर अनअवेयर ऑफ लाइफ आउटसाइड द वेस्ट। वो ट्रैवल कर लेते हैं बट दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू सिस्टम्स एंड एवरीथिंग। मैं एक डबलिनर से बात कर रहा था एंड हम बात कर रहे थे कि कतार में एलजीबीटीक्यू राइट्स नहीं हैं एंड मैंने बोला कि इंडिया में भी डीक्रिमिनलाइज हो गया है बट इट इज स्टिल नॉट लीगल टू मैरी द पर्सन ऑफ द सेम सेक्स विच आई थिंक इज absurd बट आई अंडरस्टैंड व्हाई दैट इज। मैं तो फुल सपोर्ट में हूँ इन चीज़ों के बट द थिंग इज व्हेन यूर इन अ कंट्री जब आपकी प्रायोरिटीज आर टू फीड योर पीपल, आपके लिए हमारी ह्यूमन राइट्स अभी क्या है? खाना सबको मिलना चाहिए, पानी सबको मिलना चाहिए, बिजली सबको मिलनी चाहिए, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। And then when you have all of these sorted, then you can think about other bigger social issues like trans issues and LGBTQ issues. And I wish we lived in a world जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ टैकल कर पाते, but we don't. आप लोगों को राइट्स देते रहोगे बट उनके पेट में खाना नहीं है। What are you gonna do? So I think priorities are different and जो struggles non-Western countries में होते हैं, I don't think European countries understand it. Because he asked me, why do you think there are no LGBTQ rights in India? And I said, it's not religious. I mean, some of it might be religious, but a lot of it is, a lot of it has to do with the fact that our priorities are just too different right now. Japan giant kill is not a big surprise, of course. Aryan, we will see. It will be a good match, man. I want to see Barcelona and Man United. I will probably be on मोहक भाई स्ट्रीम दैट डे उनका उनके रिएक्शन देखने के लिए। आर्सेनल बेस्ट गोल टिल डेट जो जैक विल्शर वाला गोल था अगेंस्ट नॉर्विच वेयर द टिकी टाका गोल और दैट अरशाविन गोल अगेंस्ट बार्सिलोना। Fabio Vieira was under 21 captain. हाँ, apparently Fabio Vieira is a big party boy, although Arsenal में इतने issues नहीं हुए हैं, but let's see what happens. Messi wins the World Cup, that day will be the best day of my life. Same man, same. Costa versus Ghana was like गया भाई। ऑलमोस्ट उसने बॉटल कर दिया था भाई, ऑलमोस्ट बॉटल कर दिया था। 1000 हो गए मृदुल भाई, कंग्रेट्स, थैंक यू सो मच मृदुल, थैंक यू सो मच भाई। अदानी यूनाइटेड, हाँ भाई। गुज्जू डार्बी, मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम माइन इज आलियांज अरीना। Beauty, yeah, I have not been to many stadiums to be honest, so I can't really compare, so I won't know what to say, but Allianz is very beautiful. I think the Emirates is also very beautiful, man. Yeah, it should have been evaluated 12 years before it was over. Media will always be biased towards these, doesn't matter how right way. That is true. Jasim, yes, Jasim, that's true. I think you're talking about the human rights thing. If Messi win, many people insult Ronaldo. Ho Brazil or France win World Cup. I want Messi to win, man. I just want Messi to win. और कोई भी जीते यार, दूसरा तो ट्रोल होना ही है. So I think just move past that. कॉन्गो फॉर 1K सब्स ब्रो, ज्यादा देर रहे था स्ट्रीम पे लेकिन लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट। हाँ भाई, नहीं प्लीज प्लीज स्टडी आदित्य मैन, ऑलवेज यू शुड स्टडी। खत्म कर लो, खत्म कर लो। आई ऑल्सो हैव टू लीव इन अ बिट बिकॉज आई हैव टू गेट रेडी फॉर वर्क। No restriction on traditional marriage, but it isn't recognized by law, so same-sex couples can't enjoy spousal. Yes, exactly. You don't have property rights, you can't register it. So मैरिज को आपको रजिस्टर करना पड़ता है, आप सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर नहीं कर सकते एंड आपके पास वो प्रॉपर्टी राइट्स एंड स्पाउसल राइट्स नहीं होती हैं। दैट इज व्हाई इट्स एन इशू एंड इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल फॉर ऑल ऑफ दिस टू चेंज। देखो, ऐसा नहीं है कि इस बारे ये इशू अनहर्ड ऑफ है, बट
It's going to take some time to eventually, focus on these things when our population is fed, and when our population is educated, and when we have bijli pani. Bhai, even if you're in a city like Delhi or Gurgaon or Mumbai or wherever, आपके पास, इफ यू आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट वाले एरिया जहाँ पे बहुत बड़ी टंकी है, तो स्टोरेज तो है. मेरे को याद है जब मैं हम लोगों ने घर मूव किया था, वी मूव फ्रॉम वन प्लेस इन गुड़गांव टू द नेक्स्ट, हमारे पास उधर टंकी नहीं थी. पानी 1 घंटा आता था रोज सुबह. तो भाई, India is still a nation in making. Our society is evolving. Everything takes time, and I think that's true. And I think it'll you should not hold it against your country ki why aren't you doing these rights and everything. Of course we should do it. I personally believe every human right should be equally weighted and afforded. But unfortunately, for a nation which is less than 100 years old, you have priorities about feeding your citizens and making them have enough water. Food and water are essential. अभी तो हमें एयर नहीं मिल रही भाई, हमें अच्छे से हवा नहीं मिलती नॉर्थ में. तो अब सोचो हमारी प्रायोरिटीज कहाँ हैं. Don Carl, I have no idea, Amel. I haven't read so, but I don't think so. I think he loves Real Madrid. Bye, Aisha Speed. You're doing PhD in what subject? It's not a subject, but my research topic is cybersecurity and warfare. 100 likes, let's go! Chalo, now I can finally, eventually end the stream with a happy heart. Oh, Santiago Bernabeu Stadium, Real Madrid bias. Yeah, Santiago Bernabeu is a beautiful stadium as well. मैं कैसे भूल गया. Coming to stadiums, our JLN hasn't had an athletic competition in the last 5 years. The ground near the track is sinking. Was in the news today. It's one of the only 5 super stadiums. भाई, आई वॉज जब दिल्ली की टीम थी ISL में ना, आई यूज टू गो टू JLN स्टेडियम जब भी दिल्ली का मैच होता था या नॉर्थ ईस्ट का मैच होता था, बिकॉज मैं रिपोर्ट करता था. आई यूज टू बी अ जर्नलिस्ट फॉर goal.com. इट वॉज एन अमेजिंग प्लेस टू बी, स्पेशली जब दिल्ली वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड होता था. एंड इट्स सो सैड कि दैट स्टेडियम इज नॉट बीइंग यूज्ड. इट सक्स, इट्स एक्चुअली सक्स. कल सैंटोस में से एंचेलोटी वाली वाइब्स आ रही थी. Santos को you have to give credit, man. Santos has done great things with Portugal. So yeah. Okay, Daksh, let's not make it H for human rights. Yeah, that is true, man. But I was just thinking ki, Vasu brought up about IR and politics, and I was thinking about media portrayal about Qatar World Cup is very interesting if you compare it to other World Cups. Especially in the non-Western countries. But yes, okay, Vishal, no more politics. 100 ho gaye. Yes, Vasu, thanks to you, bhau. Don Carlo is not leaving. Yes, Don Carlo. Then TCSB is, of course, the premier source on all of these. So please follow TCSB. Please subscribe to them, of course. Ancelotti's facial expression. बस ये करता है, गोल हो जाता है. Which stadium do you want to visit? Old Trafford or Anfield? Neither. I want to visit the Emirates first, yeah. Pehle I want to visit the Emirates, and then when I have more money to travel in England, I will go to both of those stadiums. Pehle Old Trafford because it's close to London, and then I'll go to Liverpool, yeah, Merseyside. Ronaldo to ISL Ambani karna. Bhai, at one point Roberto Carlos was there managing in the ISL. Zambrotta was managing in ISL. और कौन, मलूडा खेल रहा था भाई. ISL was vibes. What was the Arsene Ozil beef? I don't think there was an Arsene Ozil beef. I think Arsene actually protected Ozil more. For me, the view was pretty bad because of that running track, but it's sad that ISL hasn't even tried to reintegrate. Hi, yeah, let's just stand up if you hate Tottenham, bhai. Stand up if you hate Tottenham. Okay. Watched India versus Cameroon Nehru Cup final in JLM. The atmosphere is outrageous. India match 5-4. हाँ भाई, मतलब you have to be there, man. It's a good stadium. It's just I don't know who's supposed to take care of it. They're not taking care of it. Old Trafford is like, हाँ भाई, Old Trafford needs to be fixed. That is true. Okay, guys, I will now take your leave. Thank you so much for the comments. We've been live for 2 hours and 9 minutes, and it's 1:30 at Dublin. And I have to start leaving for work at 2 p.m. तो मैं अभी जल्दी से नहाऊंगा and I'll leave. Thank you so much for joining, यार. Ronaldo managing FC go in the future. I don't think so. I don't think so. But that will be a sight to behold.
Thank you so much for watching, guys. If you haven't liked the stream, please like the stream. Um, I will probably be at TCSB if they see my comment among the billions of comments they're going to get on their watch along. And अगर वो मेरे को लिंक भेज देंगे, so please be at TCSB के watch along पे जो दोनों matches watch करेंगे. And thank you so much for 1,000 subs. New video is coming today. आज मैंने सुबह record करा है. I'll edit it in the night after the game. Thank you so much for coming and come on, you Gunners. Road to 10K. Road to 10K will be very soon. Thanks Vishal. Thanks Akarshan. Thanks Aman, Mridul, Renisu, Varun, Spectre, Vasu, TCSB, um, Aditya, Smitesh, everyone who's come, Bipra, everybody who's the OG of the channel, who's a recent subscriber, who's come from Mohak Bhai stream or whoever, wherever you've come from. Thank you so much for being here and see you guys. Come on, you Gunners. Oh, end to ho ja.